several tools to Islamize Himalayas. They killed, raped, and massacred lakhs, thousands of Kashmiri Hindus, as well as Hindus living in Muslim majority districts of Jammu province in 1990s, early 2000, and they excised them out. Entire valley was Islamized just within a span of 3 to 4 months. It started in 1990 and it is continuous now. After that, they are now using Muslim Brotherhood's model of intruding into the democratic institutions, powerful legislative institutions of the state apparatus, and then subverting it from within, legislating laws, issuing executive orders intended at Islamization of Himalayas. Now, since in J&K's context, I'll speak in J&K's context. In J&K, they could legislate by mustering 2/3 majority in the Legislative Assembly of J&K in the year 2001 to legislate a law called as Roshni Act, which was used as a tool to allocate or to grant ownership of government lands, public lands, state lands in favor of Muslims in Hindu-dominated areas. So you have a law which is serving their purpose. And everybody who is under the government is implementing this law in favor of Muslims. Then you had an executive direction issued by the Chief Minister of the state in 2018. It's called as the Government Order of 14th February 2018, which granted legal immunity in favor of Muslims to occupy lands and kill cows. There were three clauses in the order, and it said if a Muslim occupies a state land or a forest land or a riverbed in Jammu province or in a Hindu dominated area, no DM, no SSP will take any action against him. And then there was also this direction given to all senior superintendent of police, the district heads of the police, that if a Muslim is caught in cow smuggling or bovine smuggling, cow slaughter or bovine smuggling, provisions of section RPC, section 188 RPC and Prevention of Cruelty to Animals Act, these provisions will not be invoked against them. Just one minute, I would request you to hold on just 1 second. So Rituji, you coming from Himachal and Jammu, touching borders with Himachal, the wave is going to come to Himachal. So my question to you after Ankurji is complete with his statement is that what are your thoughts on Himachal and people of Himachal and readiness of a adjoining state? I mean readiness because the news keeps coming. The news keeps coming every day to us. Yet our people have their daily business to go to. Yet our politicians have their daily business and their access to grind. Our dharm gurus keep doing the same routine day after day. When something which is happening, which is not very far from you, it's not also very far from the history. So I would like to have your thoughts after Ankurji. Just after this. Ankurji, kindly continue. Yes, so I mean, this Islamization of Himalayas is also a project which is ultimately leading to violation of Hindu human rights. And in the beginning, I already told you that there is no instrument, no mechanism, or no entity powerful enough to ensure that Hindus also get their human rights. And the level of subversion is so high that laws are being legislated to invade Hindus, to kill Hindus, to replace Hindus, to wipe off their civilization, their presence, etc., everything. Then settlement of Rohingyas and Bangladeshis in the Himalayan belt. They are being settled only in Jammu province in Hindu-dominated areas. Then you have the forests and riverbeds of Jammu province encroached through state help by connivance, acquiescence, etc. By Muslims. 95% of the forest lands in J&K have been encroached by Muslims. I mean, I am saying this on the basis of the reports which have been filed in our court cases pending in J&K High Court, wherein the department has filed affidavits detailing the extent of encroachment, providing the names of the individuals who have encroached. And it is only on the basis of that data that we have come to this conclusion that 95% of the forest lands which have been encroached in Jammu province have been encroached by Muslims. Same is the case with riverbeds and other government lands. So that is the situation. This is how this Islamization of Himalayas project is being unleashed.
And I have only dealt with the tools which are being used by the state apparatus to do this. Muslim Brotherhood, the jihadi model, the totalitarian Islamist fascist model, it believes in intruding constitutional democracies by entering democratic institutions through political parties. So all mainstream political parties of Kashmir are working on this agenda, because it is these parties which have legislated these laws. And I think the state of India has betrayed Hindus. The state of India since 1947 has always remained in denial of violation of human rights of Hindus, genocide of Hindus. Land jihad is also a genocidal process. I mean, you are capturing Hindu lands, you're reducing them to a minority, you are changing the demography by using laws, and other non-state actors are also being helped by these state actors as far as purchase of big chunks of lands for peanuts are concerned, or settling of Muslims in a particular area exclusively for Muslims are concerned. Such activities are being allowed in J&K. So I think the situation is alarming, and state of India, we are caught up between the genocide which is being unleashed by the state of Pakistan jihadis and the Islamists within, and the denial of genocide or denial of these processes by the state of India. So it's a very dangerous situation, and Jammu province has to be used as a springboard for unleashing this Islamization project on entire country. So Himachal So my question is, has already. I have another question for you. Since Hindus, okay, the word Hindu has become toxic. I mean, it's a reason that people, they can't go to their offices wearing a tilak. I mean, what is hazardous in a tilak? What is hazardous in a tilak? I have to still understand. I am sorry, I'm missing mine today. But Advocate Ankush Sharma ji, what is the message, your message, you coming from a Himalayan state, to the prime ministers and political heads of beautiful mountainous regions of Norway, of Switzerland, Angela Merkel, and UN, because it's a UN day, so we must also bring UN into the picture. What is your message for them? I mean, what can they learn from Jammu? What can they learn from Kashmir? And what do they think is their insulation against this wave of terror? Now, I think probably I'm not in a position to tell them what they have to learn, because they are also the worst victims of the same process that has been unleashed. There may be proportions, difference in proportions and gravity, etc. But then everybody is in denial mode. You see, I had read it in the beginning. The instrument which this United Nations has created for the enforcement or implementation of human rights says, and it is, what is the name of the instrument? I'm repeating it. Probably some of us have joined late. The United Nations Human Rights Council. What does it say? It says that the council investigates allegations of breaches of human rights in UN member states and addresses thematic human rights issues like freedom of association and assembly, freedom of expression, freedom of belief and religion, women's rights, LGBT rights, and the rights of the racial and ethnic minorities. So when the classification is LGBT community, racial, ethnic minorities, then how do you even expect that any community which is a majority community in any of the member states is going to get their human rights? I think these European countries probably can start with having a reconsideration, a relook at the entire legal framework, and probably we need also reforms in the constitution of what is called as United Nations Human Rights Council. It has to be neutral in all senses. Anybody who is suffering because human rights are alike fundamental rights. I mean, fundamental rights is only a subset of human rights. You have right to equality, you have right to freedom of conscience, you have right to freedom of religion, etc., freedom of expression, etc., included in Article 1 to 32. Article 1 to 30. There are total 30 articles in this Universal Declaration of Human Rights. There are 30 human rights which have been identified. They are like fundamental rights. I think the violation of all these human rights should be acknowledged and recognized for any community which is suffering. You have Hindus in Kashmir suffering human rights violations. You have Hindus in Jammu province suffering human rights violations. You have Hindus in Kerala, Bengal, Punjab. You see parts of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, South India. You talk about any state, Hindus are suffering human rights violations and nobody's concerned about it. I think these corrections can be made by
The My, best. my last question to you, Ankurji. Uh, we say that US is democratic, Europe is democratic, India is democratic. We love these beautiful words, you know. We didn't have any problems with the rights of animals and humans till we were out of these definitions. Till we were people, you know, who were living with a conscience. Till we were Hindus. But then the world started using beautiful words like secular and democracy because they were oppressing their own people, perhaps. So if I have to take the value of democracy as equal rights for all the votes, I think democracy in the simplest terms means that equal all votes for all people have equal rights. Then do the value of death also count the same? That, you know, in partition 1.5 million people died. Most of them were Hindus trying to come to India from Pakistan, running away, or the 3 million Hindus dead in Bangladesh. So, do Hindu deaths have the same value as probably Christian deaths or Muslim deaths or any other death? I mean, I count Hindus and Sikhs as one. I'm the old school person. I believe that all religions coming out of India, the land of Sanatan, have same message. So this We don't try. democracy, Yeah. this So democracy, this, yeah. this So my democracy. that one vote of democracy we try to say is the same. So Hindu death is also equal to other deaths, or they are like lesser value. You know, they are lesser people. So they are not even being counted. There's no acknowledgement. There is no recognition. So that is what I say. Democracy, secularism, etc. These big buzzwords, etc., are tools of subversion. These concepts, these policy frameworks, these ideas have been planted in the Indian state apparatus to capture it from within. And ultimately, the state of India has gone amok. State of India has become an entity which is against, which works against the nation. State of India is hostile to the Sanatan civilization. State of India is anti-nation. We represent the nation, but State of India is anti-nation. So I think we have to understand, I mean, this conundrum from this context, that the state apparatus has been taken over by planting such subversive ideas, concepts, and policy frameworks like secularism, etc. So, Hindu deaths, you talk about equality or less equality, they are not even being acknowledged or counted. Okay, great to hear your thoughts. Rituji, coming back to you, as a woman, you know, we see that as I pass this question, that you know, right now there's a big threat that has been brewing in your neighboring state, but the threat has actually gone down in a big part of the state because Kashmir is more or less Hindu free. So the only threat probably left in Kashmir, there is no threat. I don't think there is no any threat left because Hindus, as it was wanted by the now inhabitants of the state of Kashmir, it's a Hindu-free region. How do you feel about it sitting, coming from Himachal, a relatively peaceful area where the bad things like riots, because mostly it's a Hindu state, so riots don't happen in Himachal. So first of all, tell us that why do riots don't happen in Himachal? I mean, they are a normal thing. Wherever India is secular, wherever there's a sizable population, 20%, 30% of non-Hindus, there is a riot. It's neutral. We consider it normal. You know, I think for 75 years the prior governments have been taking riots as normal. So Himachal is a riot-free area. How do you feel about it? Don't you feel strange? To be honest, about 15 years back, I did not even see one Bangladeshi Rohingya or a Bihari Muslim shanty in Himachal Pradesh. It lasts 15 years. Imagine just 1.5 decades. And what I see is happening to my state is very worrisome, very, very worrisome, especially because, as you very rightly said, Jammu is massively targeted. Kashmir is gone. Jammu district is still Hindu majority, but heavily targeted, by the Muslim Brotherhood and the way Rohingya and Bangladeshi settlements are taking place in Jammu, the rise of mosque,
masjids and madrasas that have come up in Jammu in last 20-25 years is tells us a story. Now I see the same story being repeated in Himachal. Already we are seeing the story being repeated and successfully implemented in Uttarakhand. Uttarakhand has seen a very, very steep rise in just 10 years. From 2000, I think 1 to 11, it has seen a rise of about 3% Muslim population. Haridwar is about 35-40% Muslim. So your most sacred city of Haridwar is now surrounded. So definitely I, not just as a woman, but as a Hindu, feel very worried about my state. And I definitely see a massive Islamization happening of my state. I'm going to put up some figures. But before that, before I put up some figures, you know, the story of Islamization of Himalayas is a story, and the story started 1400 years back only with the advent of Islam. Their quest for global dominance started 1400 years back. So they crushed Middle East they went to Europe, of course, they were given a huge resistance in Europe and thrown out. They started moving towards India. And then again, India, we had people like Shivaji Maharaj and the Rajput belts gave them huge resistance, because of which we got saved. And then, of course, the Britishers came, which again gave, put a full stop, Alp Viram to their agenda of Ghazwa-e-Hind. But post-independence, it has again come up. So I want to tell a very nice, interesting story about a Khalifa called Umar at the time of Prophet Muhammad. So there is something called a covenant of Umar. So what is a covenant? That Jab Syria, when they were invading Syria, the Christians and Muslims there sat down and had a covenant that what non-Muslims should do or cannot do. Now a Sufi saint called Hamdani reached Kashmir during the time of Sikandar Bushtikan, and there he implemented, after making him a radical Islamic king, having converted his Kashmiri Pandit Bhatt, उनका कोई एक वो थे उनके दरबार में कश्मीरी पंडित थे जो उनके political counselor थे. He converted him, and as usual, as Islamic conquest happens, massive raids, swords, demolition of temples happened, and that is how the process of Islamification of Kashmir started. See, so what do they do first? So सबसे पहले क्या करते हैं? When this invade, even when bin Qasim reached Sindh, what really happened? The first thing they do is they start attacking your spiritual centers, your prayer centers. They come and they not only loot your temples, but they completely demolish them, erase them to the ground. Why? Why do you think they do this? Because they know it is this spiritual, it is the temple which is keeping these people Hindu. It is this temple place of worship which is going to make them that, yes, we are Hindu and these are the gods we have to worship. So demolish the temples. That was the main reason. And of course, our temples were loaded with money, so they would loot that. Now the same process, it's not that, the same process they are doing, whether it is Jammu and Kashmir, whether it is Himachal, whether it is Uttarakhand, whether it is Assam, whether it is UP, whether any corner of India, if you pick up, you will see what is the modus operandi. The modus operandi is like in Himachal also. First, they'll come in as a labor. They'll very cheap labor. 2-3 people will come. They'll make a shanty and they'll settle there. Then slowly they'll call some more people. Then the shanties will increase to about 15-20. Then they go to the local administration. Oh, we need a place to worship. Please, can we start a small mosque for ourselves? We are seculars, of course, here it is. Land below or apna mosque bhi banao. Then the mosque comes up or a madrasa comes up. Then they bring in their families. Now this madrasa then becomes their place of hold. They start distributing money through this. We are going to give you full support, bring in your families. After more families come and they start to multiply. Now, can you believe it? In a state like Himachal, where their population is roughly about 5%, we already have more than 5 mosques and about 40 madrasas, out of which around 150 madrasas were constructed during the lockdown period.
I want to ask a question to everybody. Who is giving them permission? हिंदू बेचारा तो एक ठेला भी नहीं लगा पा रहा था बाहर लॉकडाउन के अंदर और इनका मस्जिद में क्या? One question I have, just one question in between, because you said that a number of structures, religious structures have come up. So my question is, we know 1,000 years back how, invaders came, they would, kill all men, they will slaughter the kids and hold them on spears, and they will make sex slave of the women. And this is how the population of also the population of non-Hindus kind of increased, because of the women were made sex slave and the kids automatically gone to the took the religion. They took up Islam. So, what do you think is the insulation of those previous governments which allow these structures to pop in still when they don't see the history of Kashmir or any other place, even Afghanistan, where now the regime is eating itself. Now the fight in Afghanistan is not between Muslims and not Muslims, but who is a better Muslim? And the previous institution now, because in Himachal, there's again the government which has been allowing infiltration of Bangladeshis in India. They have won. So we will see more such structures coming up. What do you feel? What is the message for all the voters of Himachal who have voted in this government, which has, allowed crores of Bangladeshis and Rohingyas to come into India through illegal means over the last 70 years? What is the message to, and especially the women voters of Himachal? What do you want to tell them? That what are the kind of days which are coming? Okay, so Vashisht, I was on a on the same topic. I was on Madhukishwarji's show day before yesterday, and I am going to tell you something that I said there. And I say, as a completely neutral Indian citizen or Hindu citizen, for me, my dharma is more important than which political party is in power or not in power. So yes, this whole process of Islamification of Himachal started during the UPA era, no doubt about it. Then, because we saw that, we wanted a change, because we wanted a government which could stop this, which could put a full stop to Islamification of Himalaya. So we said no more of Congress, and we are going to elect somebody we saw hope in, and we thought they are going to deliver for us. Now, what do we see instead? You will be shocked to know. All these figures I'm telling you has happened during the BJP rule and not during the Congress rule. Now, instead of stopping all the Islamification, and I'm going to speak in respect to Himachal only because that's my state, and of course, the same thing is happening in Uttarakhand also. Uttarakhand has seen massive Islamification during the BJP rule, and it continues to see that. As for Himachal, I can tell you on record, maximum number of mosques have been built during the BJP era. Maximum number of shanties and the movement of Muslim labor, which is probably Rohingyas and Bangladeshis, have happened during BJP era. Our sacred towns, Devi sthals, Devi temples like Jwalaji, Chintpurni, all data is there on Twitter, I have put it up, are now surrounded by mosques and madrasas. Where are they coming from? How is administration even allowing that to happen? It's all surrounded. Within the radius of 5 to 10 kilometers, you will see a huge mushrooming up. So to say that Congress will do and BJP will not do is something, I really do not agree to anymore, because I have seen both the parties. I have seen how governments are behaving and delivering. So now the onus is, so, Himachal got a change, not because, of course, there are civilizational reasons also. And I did tell you that, one of the civilizational reasons, for example, I'll tell you, was the murder of Prachi Rana, 15-year teenage girl in a place called which is very close to my village. She was brutally murdered by a jihadi because she did not accept his love proposal. And she was brutally murdered this year only. And can you believe the sitting BJP MLA did not even pay a visit to her? They have done nothing. So many outrages, so many this thing, and that MLA has now lost. Okay, so point is, you have power.
You have to deliver for your people. Now, when we see that neither of the parties are going to be concerned about Hindus, so I think now the onus is completely on Hindu society of Himachal Pradesh to take and demand, which irrespective of which party is in power, they have to go and demand, please stop this. And before that, they also have to understand that I do agree that, see what happens when, as I was telling the story of the shanties coming up, then they get involved in your economic process. ठीक है अब टेलर बनकर आ गए. I had done a tweet thread on a story, of a tailor in Kangra who was again attempting a love jihad and was brutally beaten up. So what do they do? अभी वो आ गया बेचारा, मैं तो टेलर हूँ, मुझे प्लीज एक शॉप किराए पे दे दीजिए. So हिंदू, अच्छा ठीक है तुम्हें शॉप चाहिए, हम आपको ना ज्यादा किराया भी देंगे औरों से. So Hindu will immediately give the shop, अरे ये लो हमारा शॉप ले लो. And once the tailor shop is set up, their whole now you see how they are filtering your economic process. So they take over. First they will filter, then they will take over. They'll make you completely dependent upon you. Now, once that happens, it is very difficult. So my request to Himachali citizens would be, even if there is some difficulty, you're not finding a labor, or if you're not finding a person to give out your shop or home for rent, please do not give it to an illegal migrant. My last question to you, which is a Sure. very interesting question. You are also a mother of, I think, young kids and living in a Yes. metropolitan house. All our young Hindus going to good schools, our woke Hindu youngsters, don't they see it coming? I mean, what is the thing that this woke culture, which is something probably I would say that when you don't want to see the truth, you kind of deny, It's like going from close landfill, a site which has filthy smell coming, and we just pinch our nose thinking that, okay, fine, let's just avoid this. So Wokism looks to me like a passerby, closing his nose rather than trying every day they close their nose and they pass by a certain section without trying to see that what are the reasons which is making this filth, this stench emanate. So, yeah. So, I mean, this woke culture is going to be counterbalanced by something called a activist culture where they easily label somebody talking about Hindu deaths, rapes. I know some young Hindu girls who say no, this death, this butchering, they don't want to. They have so less attention span that if they come to think of another young woman who has been cut into 35 pieces, 40 pieces, 70 pieces, I mean, wow, how does not enter into the conscience of young women, woke kids, woke voters? Does it have something to do with our parents not telling our kids what our history has been, and that is why we have become without roots? Yeah, what are your thoughts on that? How is the woke culture making Look, us? I understand the time is ending, so I'm going to make it. I'll try and wrap it up. I'll try and wrap it up in few lines, but it's a huge topic, Vishisht. We have spoken about it earlier, and I think probably we need an hours and hours of discussion on this and to go to the root of it. But I'll try and wrap it up. See what has happened. As we started the discussion with Article 28, that Hindus cannot teach their religious text to their children. Now, just think of it. Last 75 years, Hindus have got no exposure to their religious text. So what has happened in the process? That Hindus have become de-Hinduized. We talk about decolonialization and everything. No, our problem is not that we need to decolonialize ourselves. We are de-Hinduized society, uprooted from our children, from our roots, from our religion, from our dharma, from our rituals. We do not think like a Hindu because our education is based on the template of liberalism, socialism, fraternity. These are not Hindu dharmic prisms to look at education. These are completely westernized subjects. And if this is an empty glass,
I can fill it with water, I can fill it with wine, I can fill it with whiskey, or I can fill it with honey. It all depends upon us, that what we are filling, how we are conditioning the society to be. And where is the conditioning happening? How does conditioning happen? Conditioning happens through education. Now, a Hindu child, when he is born, the first thing his parents teach him is all religions are same. Now, tell me something. Now, when you are teaching your children that all religions are same, and then when a girl like Shraddha goes and marries or wants to marry an Abbasi or an Aftab, we tell her, oh, no, don't do this. Come on, you don't. I mean, of course, she is at mistake, but you are also at mistake, because when she was 5 years old, you taught her that all religions are same. Now, why the parents taught this? Because this is exactly what they have learned. So intergenerational knowledge is all religions are same, Hindus are secular, and we are being conditioned like that. We are being conditioned to follow liberal values, and the moment liberal values are given, hedonism sets in. I, me, myself, my life, my whatever that is, my life, my needs, or whatever I want to do. So that's how the work culture has been promoted. Our education is completely responsible for it. And if this is not changed at war footing, trust me, we just have about another 10 years, probably our generation and another generation is the last group of people we'll have who will probably call themselves that proud Hindus. After that, we are lost. And if there, now the solution is either the government amends Article 28 and gives Hindus also the rights to teach their religious texts. Our children also need exposure. Just for record, I want to put a data. Christian and Muslim children get about 1,000 hours of their religious studies by the time they are 17 and 18, and Hindu child gets 0 hours of their religious education. So tell me, what do you expect that child to be if not woke? He will turn out to be a woke child. Of course, he is going to tell, "Arey, wo maar diya, koi baat nahi," because this is what his conditioning has been like. So you have to do root analysis of our problem, which is our education, and work there. So either tell the government that please give Hindus rights to teach, or please free our temples. We will again take back our temples and make them centers of learning, our culture, but give Hindus something so that we can also take care of our children and give them some religious exposure. Of course, a huge topic, and we'll definitely discuss it some other time, but you talked about work. This is the reason. Thank you so much. Thank you so much for joining, Rituji. Thank you. So, yeah, what I understand is that our lovely country, since it transitioned from Bharat to India, our institutions have been taken up, our books, storybooks, movies, everything has been taken over. I think this was probably one reason of making Bharat into India, so that everything could be taken up. So the jihad of the whole country started probably as soon as it became India from Bharat. Perhaps for the sake of self-preservation, we will have to go back to being Bharat. Seems like the solution because of how the institutions have been taken up. How even the parents don't know, they don't want to know. It's just like all the cultures, in which case, like let's say the Jews, they have been able to survive because in their classes they tell that what has been the history. So thank you so much to the previous panel. We will do a detailed talk on this. Every following week, we will take up all these discussions and do a 2 hour conversation. I would like to invite Palak ji, who's my co-host. Palak ji, can you please, I would request the team to please unmute Palak Agarwal. She's hosting the next session. And Ravi Ranjan ji, Somendu ji, Jai Ahuja ji, I'll have to call to see. Pranam ji, Pranam Guru Ravi Ranjan ji ko, Pranam Somendu Pahadi ji ko, thanks for joining. Palak ji, thanks a lot. Thank you.
So Somendu ji, I have just been in touch with you recently. नमस्कार Young नमस्कार नमस्कार from International Hindu Voice, Ravi Ranjan ji, मेरा आवाज आपका पास आ रहे है क्या? जी आपका आवाज हेलो आ रहा है जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, वी कैन हियर यू, वी कैन हियर। आवाज आ रही है सर। रवि नमस्कार रंजन सबको जी, नमस्कार। रवि रंजन जी को नमस्कार सबको नमस्कार, प्रणाम प्रणाम, नमस्कार सब लोग। पलक जी, thank you for taking care of this session. I will request Jayanta ji to also join. Just a small thing. आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहे है, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहे मेरे पास। आपका पलक, can you hear me? Yes, I can Your hear voice break. Okay. So, Somendu ji, I think the challenge is with on your side, because on one side it will be high. But anyway, आप unmute कर सकते हैं। वॉइस ब्रेक कर रहा है, वॉइस ब्रेक कर रहा है। हाँ जी, आपको एक बार कनेक्शन लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन। डन ठीक डन। One second. Can you please unmute Ravi Ranjan ji? Ravi Ranjan ji, kindly unmute Sardar Ravi Ranjan ji. आपको आवाज आ रहा है मेरा? हाँ जी, बहुत गुड जी। हाँ जी। तो थैंक यू। मैं होस्ट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे पहले छोड़ दीजिए, क्योंकि पहले अगर बोलने मौका दीजिए तो मेरे लिए अच्छा होगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, होस्ट है तो जी। हेलो, सुनाई दे रहा है? जी परब जी, ओवर टू यू। हेलो, All right. आप सभी को राम राम एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग दिस सेशन हियर। सुमेंदु जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? इज माय वॉइस क्लियर टू यू? जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से हम परसिक्यूशन ऑफ हिंदूज अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और स्पेशली हम इंडिया में केरला का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उस पर अगर हम बात करेंगे तो आई इनवाइट सुमेंदु जी फर्स्ट बिकॉज ही हैज रिक्वेस्टेड इट। सो प्लीज गो अहेड विद योर व्यूज ऑन द टॉपिक। जी, देखिए, सबसे पहले मेरा परिचय सब लोगों को मैं दे रहा हूँ कि मेरा नाम सोमेंदु पहाड़ी है। हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल हिंदू वॉइस, मैं फाउंडर स्पोक्स पर्सन है, और हमारा ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में और बांग्लादेश में काम कर रही है। और आपके बारे में जो आज इनवाइट जो किया था वशिष्ठ जी, बताया कि फ्लायर जो भेजा गया था, वहाँ में जो टॉपिक्स है कि बांग्लादेश के और बंगाल और बांग्लादेश के हिंदू के बारे में, और गवर्नमेंट क्या बोल रहे हैं और रियलिटी क्या है। देखिए, बांग्लादेश में हिंदू का समस्या और बंगाल का हिंदू का समस्या, ये दो टॉपिक्स है कि बांग्लादेश में हिंदू का समस्या है कि अगर मैं हिस्ट्री में जाएंगे, जब इंडिया आजाद हुआ बाद पाकिस्तान पैदा हुआ है, उसके बाद में 1971 में जब बांग्लादेश नया कंट्री बनाए हैं, तो उसके बाद लगभग बांग्लादेश में बहुत हिंदू कम्युनिटी थे, मंदिर भी थे। अगर आज मैं बात करूं तो बांग्लादेश में ग्रेजुअली हिंदू कम्युनिटी कमती जा रही है। अभी तक बांग्लादेश में हिंदू परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन 7.9% अप्रोक्सीमेटली। तो बांग्लादेश में तो हिंदू का हर दिन अत्याचार होती रहती है, हर दिन अलग अलग तरीके से होता रहता है कि वो जो देखा गया है कि देखिए, करंट बांग्लादेश में सरकार है, हसीना सरकार है, वो बोल रहे हैं कि हम हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में किसी पॉलिटिकल पार्टी
कि बांग्लादेश में रूलिंग पार्टी हसीना है कि अपोजिशन पार्टी बीएनपी है, और एक ही पार्टी था कि इशरत का नाम है जातीय पार्टी। तो किसी पार्टी हिंदू के नहीं काम करते हैं, ठीक है। तो हर दिन हिंदू का अत्याचार होती रहती है। आज भी हिंदू को अत्याचार भी हुआ है, मंदिर भी आज भी तोड़ा गया है, आज भी कन्वर्सन बांग्लादेश में लाभ जिहाद हो रही है, बहुत अत्याचार हो रही है। लेकिन बांग्लादेश से हिंदू तो पश्चिम बंगाल में आती रहती है कि ओपन बॉर्डर है, वो बांग्लादेश में प्रोसिक्यूशन हो रहा है इसलिए आ रहे हैं। हाँ, मैं बांग्लादेश सरकार के गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है, जी मंत्री है, एमपी है, जी हसीना बिना जितने मंत्री है, एमपी है, मेरा एक्सेस है, उनको सबको बताया, बातचीत हुई है कि बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार हो रही है, आप लोग क्यों हिंदू को अत्याचार हो रही है रोक नहीं पा रही है। अब अत्याचार हो रही है लेकिन केस दर्ज नहीं होता है, कोर्ट में मामला जाता है तो मामला खारिज कर देता है, मामला पेंडिंग में दे देता है। तो हर दिन अलग अलग समस्या, किसी हिंदू एक ऑफिस में काम करता है तो क्या होता है, उनको मेंटली प्रोसिक्यूशन होता है कि 9 मुस्लिम है, एक हिंदू है, वो उनको मेंटली अत्याचार, मेंटली प्रोसिक्यूशन उनको करती है, मेंटल टॉर्चर करती है। तो बांग्लादेश में समस्या है, बांग्लादेश में होती रहती है समस्या। ये समस्या समाधान इंडियन गवर्नमेंट करेंगे, पाएंगे, किस प्रकार से करेंगे। ये इंडिया गवर्नमेंट का डिसीजन है कि फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट है, तो उनका इंटरनेशनल कुछ मुद्दा है तो डायरेक्टली बातचीत नहीं करते कि ओपन फोरम में बात नहीं कर सकते, पब्लिक स्पीकिंग में बांग्लादेश बारे में कुछ नहीं बताया। तो ये बांग्लादेश के हिंदू के लिए समस्या है। लेकिन बंगाल में भी यहाँ में भी हिंदू अत्याचार होती रहती है। यहाँ का लगभग 38,000 गांव है, ऐसे गांव है कि हिंदू सुनो टोटली जीरो पॉपुलेशन नहीं है। ऐसे हजार गांव है यहाँ का जो हिंदू माइनॉरिटी है, हजार गांव है, हिंदू मुस्लिम इक्वल है। तो यहाँ में वेस्ट बंगाल में भी अत्याचार होती है, बांग्लादेश में हो रहा है, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। तो क्या करेगा, यहाँ में ममता बनर्जी मुस्लिम को पावर में कुर्सी में रहने के लिए मुस्लिम तोषण कर रहा है, मुस्लिम के लिए पॉलिटिक्स कर रहा है। तो क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट देखिए, अगर कौटिल्य में कहा था बात, अगर पावर में मुझे पावर में अगर नहीं आएंगे, सरकार यहाँ में पश्चिम बंगाल में बदल नहीं होगा, तो बंगाल का स्थिति जो समस्या है ये समाधान नहीं होगा। तो क्या होगा, यहाँ में तो अत्याचार हो रही है, बांग्लादेश में हो रही है, लेकिन सरकार हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट उनका कुछ उनका समस्या है, उनका कुछ है, ओपनली उनको बात नहीं करती है, नहीं कर रही है। तो मैं बातचीत किए हैं तो उनको वो डिप्लोमेटिक में काम कर रही है, ठीक है। उनका समस्या है कि गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट अपोजिशन में है तो कुछ बात कह सकते हैं कि गवर्नमेंट चलाने के लिए तो कुछ समस्या है, वो डायरेक्ट बोल नहीं पाते हैं। देखिए, बांग्लादेश में अभी तक 2.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू है, 2.5 करोड़ से ज्यादा हिंदू है। बांग्लादेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा इंडिया में आए हैं, तो उनका रोल क्या है अभी तक। देखिए, ये मुतवा जो है, मुतवा कम्युनिटी, मुतवा, वो बांग्लादेश से हिंदू आए हैं यहाँ में। वो यहाँ में आके वो क्या बोल रहे हैं कि मुतवा ये अलग धर्म है, ये हिंदू नहीं है, ये कम्प्लीटली वेद गीता मानते नहीं है। तो मुतवा बांग्लादेश से जितने मुतवा है, 90% मुतवा वो क्या कर रही है, बंगाल में क्या कर रही है, वो राष्ट्रपति को पिटीशन दे रही है कि हमको अलग रिलीजियन मान्यता दी जाए, हम ये नहीं है, हम हिंदू धर्म मानते नहीं, वेद गीता मानते नहीं है। वो बांग्लादेश से आए हैं।
मेरा परिवार, मैं बांग्लादेशी जो इनवाइट किया था मुझे बांग्लादेशी हिंदू के बारे में काम कर रहा हूँ, तो बोला कि मैं बांग्लादेशी हूँ। मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ कि मैं 500 साल से ज्यादा पश्चिम बंगाल का हूँ, यहाँ का सैलर हूँ, भूमिपुत्र हूँ। मेरा परिवार भी फ्रीडम में देश आजाद में लड़ाई किए थे। तो देखिए बांग्लादेश इनका रोल जितने उनका इंडिया में जितने बांग्लादेश से हिंदू आए हैं उनका रोल बहुत ही बुरा है, बहुत ही बुरा है। मैं बहुत वेबिनार किया है, वेबिनार में ऐसे वेबिनार बहुत, मैं 100 से ज्यादा वेबिनार किया है। बांग्लादेश से मंत्री भी आए हैं मेरा वेबिनार में, सरकार की मंत्रियां हैं भारत सरकार की, वो मुद्दा उठाती नहीं है। बांग्लादेश में 20 हिंदू एमपी हैं, वो तो बांग्लादेश के हिंदू के बारे में कुछ नहीं बात है। एक दो मनोरंजनशील नाम का एक एमपी है, वो कुछ बोलती है जी हिंदू के बारे में, महेंद्र जी, मैं मनोरंजनशील ना। आपको एक सेकंड के लिए इंटरप्ट करना चाहूंगी और एक क्वेश्चन इसमें ऐड करना चाहूंगी कि जब 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था, तो उस समय की जो रिपोर्ट है उसके हिसाब से ये भी लिखा है कि हिंदुओं को किस तरीके से मारा गया था, उनके शॉप्स और उनके लैंड को लिया गया था, तोड़ा गया था। इवन येलो कलर के पेंट से उनके घरों के बाहर एच भी लिखा गया था ताकि मार्क किया जाए। लेकिन फिर भी उसको जेनोसाइड माना नहीं जाता, लेकिन फिर भी हिंदुओं के दर्द को नहीं समझा जाता है। तो ऐसे में आप अपने पॉइंट को इलैबोरेट करते हुए एक्सप्लेन कीजिए। देखिए 1971 में जो वार हुआ था, वहां में टारगेटली मेनली टारगेट था हिंदू का टारगेट था, क्योंकि अगर हिंदू तो ज्यादा हिंदू, देखिए 30 लाख से लगभग 30 लाख कम से कम हिंदू मारे गए थे, 29 लाख कम से कम। तो देखिए उनका मैक्सिमम हिंदू वो पाकिस्तान से अलग होने के लिए, अलग राष्ट्र पैदा करने के लिए उनका ऐसा कि हम पाकिस्तान में नहीं रह सकते। पाकिस्तान तो टारगेट का, अगर हिंदू खत्म कर देंगे, मुस्लिम हमारा भाई होता है, अगर वो तो ठीक है 10% मुस्लिम हमको सपोर्ट नहीं करेंगे, 90% मुस्लिम हम लोग को सपोर्ट करेंगे, उनका टारगेट है। तो अलग अलग प्रोसिक्यूशन तो बांग्लादेश में जेनोसाइड तो हुआ है, सब लोग दिखा है, लेकिन ऑफिशियली नहीं किया गया है। तो क्या करेंगे, ये हमारा तो हिंदू के लिए नहीं, भारत सरकार तो कर सकती है। अभी तक कांग्रेस सरकार 70 साल वो तो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स किया है। और नेपाल में है, नेपाल में था कम्युनिस्ट सरकार का था, कम्युनिस्ट है तो कुछ वो तो कह नहीं सकते। तो क्या करेंगे वो, ये क्या होता है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि ये अगर जेनोसाइड मानना है ये सरकार कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है हम लोग वॉइस उठाते हैं, लेकिन सरकार का मुद्दा है, सरकार उठाएंगे। अभी बच्चा भाजपा है जी तो जी उनका समस्या भी है, मानता जी हूं उनका समस्या है, उनका उठाने के लिए उनको मैं किया है, उनको बातचीत भी किया है। उनका कुछ समस्या है, उनका उठा नहीं पाएंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन है, वो रिलेशन रिश्ता खराब हो जाए कि कुछ कुछ मुद्दा है, समस्या है, मैं पब्लिक में नहीं बात शेयर करता हूँ। ठीक है, तो ये तो जेन्युइन है, तो वहां में ऐसे ऐसे प्रोसिक्यूशन तो हुआ है। जी, क्योंकि जैसे जब तो 2013 में इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने जमात मेंबर्स को 1971 वॉर के लिए चार्जेस दिए थे कि इनके ऊपर चार्जेस हैं, तो उस टाइम पर भी जमात के सपोर्टर्स ने रिटालिएशन में हिंदुओं पर ही अटैक किया था और 2013 में भी उसी तरीके से फिर से हिंदुओं को परसिक्यूट किया गया था। तो किस लेवल पर लोग वहां हिंदू वहां आवाज उठा सकते हैं, ये भी मेरा सवाल है। और साथ में ये सवाल भी है कि एक बुक है द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ रिफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, जिसको प्रोफेसर अबुल बराकत ने लिखा है। तो वो ये क्लेम करते हैं कि जिस तरीके से पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज बांग्लादेश में डिक्लाइन पे है, यानी 1974 में 13.5% थी, लेकिन 2011 में 8.96% थी। तो उस तरीके से अगर डिक्लाइन रहा तो 30 साल में बांग्लादेश में कोई हिंदू नहीं बचेंगे। तो ऐसे में मेरा आपसे सवाल ये है, क्योंकि आप वहां की ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, वहां काम करते हैं, तो व्हाट शुड बी द स्टेप्स, व्हाट शुड बी द सोल्यूशन दैट शुड बी टेकन? क्योंकि बातें तो हम सब कर ही रहे हैं, हम सब अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं, लोग अब आवाज उठाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ऐसे कौन से सॉलिड स्टेप्स है जिससे सोल्यूशन आएगा? किस आपका पहला जो क्वेश्चन था, क्या बांग्लादेश में 2013 में जमात इस्लाम के बारे में, देखिए जमात तो हम कहते हैं बांग्लादेश में जितने मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन सब जमात है। ये क्या होता है, अगर
ये अलकायदा जब बंद हुआ है तभी अलकायदा कुछ लेके ISIS बनाए हैं। जमात बंद हुआ है, जमात लोगों को अलग अलग संगठन बनाए, जो हिफाजती इस्लाम है बांग्लादेश का एक संगठन है। आप उलामा लीग, नॉट आवामी लीग, उलामा लीग का एक संगठन है। अंसारुल बांग्ला है बांग्लादेश में, बहुत इस्लामिस्ट ऑर्गन जितने हैं सब वो टाइप ऑफ जमात है। ठीक है, जमात तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि वो भारत में 1701 में भारत के विरोध में था। ठीक है, इसलिए सब जमात है। तो वो तो सब क्या करती है, सब मिलजुल करके एकजुट करके हिंदू को टारगेट करती है कि बांग्लादेश में कि हिंदू शून्य हो जाए। अगर हिंदू शून्य होगा तो अफगानिस्तान देश में क्या होगा, हमारे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये पूरे तरफ से ये जो पूर्व भारत है, ईस्ट इंडिया है, बहुत ही क्या होगा, खतरा होगा। यहाँ में हुमकी हो जाएगा क्या, यहाँ में बांग्लादेश में घुसपैठी आएंगे। यहाँ में बंगाल में ओपन बॉर्डर है, बहुत ओपन बॉर्डर है, बांग्लादेश से आती जाती रहती है। ठीक है, यहाँ हुमकी हो जाएगी कि बांग्लादेश देश के अंदर में एक मुस्लिम राष्ट्र, आतंकवादी राष्ट्र पैदा होगा। इंडिया का जो चिकन नेक पॉलिसी है वो भी नष्ट हो जाएगा, प्लान वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन और अब्दुल बराकत ने, आपने कहा कि अब्दुल बराकत ऐसे ही तो है, 20-30 साल के बाद बांग्लादेश में जो अभी तक हो रही है, हर दिन हो रही है। ठीक है, लैंग्वेज के बारे में तो हम ज्यादा पता है कि बांग्लादेशी बंगाली लैंग्वेज, हमारा बंगाली लैंग्वेज, इसलिए ज्यादा नॉलेज में है। ठीक है, हर दिन तो अत्याचार होती है। आप सोशल मीडिया में कमेंट में देखिए, हिंदू के बारे में कुछ भी पोस्ट है सोशल मीडिया में, कुछ भी पोस्ट है बांग्लादेश से जितने हिंदू के रिलेटेड कोई भी पोस्ट है, मुस्लिम का कमेंट देखिए, 99% मुस्लिम का कमेंट है हिंदू का खिलाफ, हिंदू का अगेंस्ट में कमेंट है। ठीक है, वो हिंदू को हटाओ, हिंदू का वो रॉ का एजेंट है, ये हिंदू इंडिया बांग्लादेश का नहीं है, ये रॉ का है, ये इंडिया का है, बांग्लादेश में क्यों हटे है वो। और एक भी कमेंट बोलती है कि आप मालाउन, मालाउन बांग्लादेश का हिंदू को मालाउन कहते हैं कि ये मालाउन का बच्चा है, इनको बांग्लादेश से हटाओ, यहाँ का जगह नहीं है। ठीक है, तो ये तो सही है अब्दुल बराकत कहा कि, लेकिन ये क्या करेंगे, मुस्लिम सॉल्यूशन नहीं है कि बांग्लादेश के तोड़ के, ये बांग्लादेश कुछ डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो डिस्ट्रिक्ट लेके अलग हिंदू के लिए लैंड, अलग लैंड नहीं बनाएंगे तो बांग्लादेश सॉल्यूशन नहीं है, ये है। जी एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि अभी मैं रिसेंट जो एक रिसर्च कर रही थी शिलोंग के जेनोसाइड, हिंदू जेनोसाइड पे, तो वहां पे भी 1979 से जो जेनोसाइड है उसमें बांग्ला हिंदूज को, यानी बंगाली हिंदूज को ही ज्यादा टारगेट किया जा रहा है और उन्हें यही कह के मारा जा रहा है कि वो बांग्लादेशी हैं या वो इंडियंस नहीं हैं। तो उस पर अगर आपका कोई कमेंट। क्या मैं আবার दूसरी बार आप करिए, सेटा करिए क्या आप? जी बिल्कुल, मैं अभी शिलोंग के जेनोसाइड, आवाज, हिंदू जेनोसाइड, मेरी आवाज क्लियर है आपको? हाँ जी जी। मैं अभी शिलोंग के हिंदू जेनोसाइड पे रिसर्च कर रही थी, तो वहां पे भी यही चीज स्टार्ट हुई है कि 1979 से बांग्ला हिंदुओं को, यानी बंगाली हिंदूज को ही टारगेट किया जा रहा है और उनको बांग्लादेशी बोल के ही उनको मतलब एथनिक क्लींजिंग उनकी वहां की जा रही है। तो अगर इसके बारे में आपका कोई कमेंट। अच्छा, आपने कहा कि शिलोंग, शिलोंग का जेनोसाइड की आपको बात कहा क्या? जी जी, वहां पे भी आवाज वहां पे नहीं, भी बंगाली, जी वहां पे भी बंगाली हिंदुओं को ही मारा जा रहा है। देखिए वहां में भी बंगाली हिंदू, लेकिन देखिए बस डिफरेंस, ये, मैं आपको ये पॉइंट क्यों रेस कर रही हूँ मैं वो क्लियर कर देती हूँ। डिफरेंस ये है कि बांग्लादेश में वो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं जो हिंदुओं को मार रहे हैं, लेकिन शिलोंग में वो मिशनरीज के थ्रू मोटिवेटेड है। तो मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ कि डबल अटैक है बंगाली हिंदुओं पर। ना ये तो सही है कि बांग्लादेश में जो हिंदू इंडिया में आए हैं, तो अगर टारगेट इसलिए कर रहा है दोनों तरफ से, मिशनरीज द्वारा, वो तो ठीक है, वो कर रही है, लेकिन यह क्या कर रहेंगे, अगर
हिंदू को माइनॉरिटीज करेंगे तो उनका तो क्या होगा, उनका जो ऑब्जेक्टिविटी है उनका वो पूर्ण हो जाएगा। तो ये तो सही है, तो रिपोर्ट तो सही है, गलत नहीं है। और देखिए बांग्लादेश में जितने हिंदू यहाँ में आए हैं, अगर कम्युनिस्ट पार्टी देखिए, बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टी, टीएमसी और भाजपा, तीनों पार्टी, कांग्रेस छोड़िए, तीनों पार्टी में ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी हिंदू है। भाजपा छोड़िए, अगर कम्युनिस्ट पार्टी में 90% बंगाल में जितने कम्युनिस्ट लीडर थे सब बांग्लादेश में आए हैं यहाँ। तो यहाँ क्या है, उनका रोल क्या है? बंगाल में जितने हिंदू हैं मैक्सिमम देखिए, कुछ 10% हिंदू के लिए हित में लिए, हिंदू के फेवर के लिए, ठीक है, वो बांग्लादेश में प्रोसिक्यूशन हो रहा है, वो वॉइस उठा रही है। और 90% बांग्लादेश से हिंदू बंगाल में आए हैं, वो तो मैक्सिमम कुछ लोग सेकुलरिस्ट हो गया, ह्यूमैनिस्ट हो गया, कम्युनिस्ट हो गया। उनका रोल क्या है? उनका रोल क्या है? देखिए सुभाष सरकार, मेरा वेबिनार, एक भी वेबिनार आयोजन किया था, सुभाष सरकार हमारे मिनिस्टर एमओएस एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो भी आए थे। वो तो सुभाष दा तो बांग्लादेशी ओरिजिन है। निशित प्रामाणिक है, वो तो होम डिपार्टमेंट एमओएस है। शांतनु ठाकुर है, तो ये तो सभी बांग्लादेश से आए हैं। तो इनको ज्यादा वॉइस उठाना है। अगर यहाँ साइलेंट होगा तो क्या होगा? तो इनको तो बांग्लादेश, उनका वॉइस सबसे जरूरी है, उनका वॉइस उठाना। ये तो, लेकिन देखिए बांग्लादेश में हिंदू के बारे में देखा, कुछ भी नहीं हिंदू के बारे में उठा दिया। अगर बांग्लादेश में है और पश्चिम बंगाल में है, ये दोनों भी उठाए नहीं है। और बांग्लादेश से जितने हिंदू बंगाल में आए हैं, उनका रोल भी देखा है। बांग्लादेश प्रोसिक्यूशन लिए एक मूवमेंट करने के लिए हम बांग्लादेशी यहाँ में जो ये है एरिया है, वहां में गए हैं। तो जाके मैं बताया कि देखिए आप तो बांग्लादेश में आए हैं, तो क्या आपका जो पूर्व पुरुष है वहां में अत्याचार हो रही है, हर दिन अत्याचार हो रही है, तब चलिए आपको कम्युनिटी को लिए आप अत्याचार हो रही है, हम मूवमेंट करें, प्रोटेस्ट करें। वो आए नहीं है, हमारा साथ नहीं दिया है, तो क्या करेंगे? तो ये तो ठीक है, तो लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। हमारे देश में ना धार्मिक आइडेंटिटी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रीजनल आइडेंटिटी है या कल्चरल आइडेंटिटी है। तो वो लोग जो आए हैं और जो आप कह रहे हैं आज मंत्री बन के बैठे हुए हैं, वो एक और हिंदू की मदद नहीं कर रहे हैं। पर अगर आप उन्हें कहो कि यू आर अ बैड हिंदू, वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। बट इफ यू टेल देम यू आर अ बैड बंगाली, शायद वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आपको लगता है कि ऐसे जो थिक स्किन पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए आम हमारे जैसे लोग किस तरह की कैंपेन स्टार्ट करें, किस तरह से उनको उनकी चेतना को जगाएं, उनकी खुददारी को जगाएं, उनके एक कर्तव्य को जगाएं? उसके लिए कुछ आपको लगता है कि वी कैन स्टार्ट अ ट्वीट कैंपेन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? क्योंकि सवाल तो जितने यहाँ पर लोग हैं ना, उनको सिचुएशन पता है। यहाँ पर बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए, हिंदुओं को ऐसा कर लेना चाहिए। ये सारे लोग आपसे जुड़ने के लिए तैयार हैं। ये सारे लोग आपके ट्विटर पे आपकी बात को यूएन तक पहुंचाने के लिए तैयार हैं। क्या आप ऐसा कुछ इनिशिएटिव लीड करना चाहेंगे जिसमें ग्लोबल हिंदू काउंसिल के माध्यम से, संगम टॉक्स के माध्यम से आपकी आवाज को, आपके साथ जुड़े हुए जो बाकी बंगाल और बांग्लादेशी एक्टिविस्ट हैं, उनकी आवाज को हम यूएन तक पहुंचाएं? क्योंकि ये सभी लोग जहाँ जिनके कमेंट्स आ रहे हैं आप देख पा रहे हैं, ये सारे लोग उसके लिए तत्पर हैं। दे आर वेरी इंटरेस्टेड टू सपोर्ट यू। तो क्या अपील करना चाहेंगे ताकि पॉलिटिशियंस को शेक कर सकें? क्योंकि हमारे यहाँ का वोटर भी कंसर्न्ड नहीं है, और हमारे यहाँ का जो 4200 एमएलए है इस देश में, उनको भी अपने 5 साल के अगले इलेक्शंस दिखते हैं। पिछले 1000 साल का इतिहास, जो हमारा ब्लड शेड वाला इतिहास है, वो नहीं दिखता। तो हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आप सोचें थोड़ा सा। इतने में हम सरदार रवि रंजन जी, जो कि भारतीय पॉलिटिक्स को और विदेशी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं,
तो सोमेंदु जी, हम आपके पास 5 मिनट के बाद दोबारा आएंगे। इतने आप अगर कुछ सोचना चाहें कि यस, ऐसे करने से फायदा मिलेगा, बिकॉज आपको अभी जो हिंदू कम्युनिटी है देश के और दुनिया के बहुत हिस्से से सुन रही है, इफ यू हैव अ गेम प्लान, वी कैन बी द प्लेटफॉर्म। और पलक जी, प्लीज जी सरदार रवि रंजन सिंह जी, उनको इनवाइट कीजिए सो दैट वी कैन गो टू सोमेंदु जी अगेन इन लाइक 5 to 7 minutes। जी बिल्कुल। सोमेंदु जी, हाँ, टेक योर टाइम एंड थिंक अबाउट। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। मैं स्वागत करती हूँ सरदार रवि रंजन सिंह जी का कि वो आए और इस हिंदू जेनोसाइड पे जो ग्लोबली चल रहा है उस पर अपने व्यूज रखें। आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि मेरे भाई ने कह दिया कि उन्हें निकलना है या समय का अभाव है, तो पर क्योंकि मेरे को भी निकलना था तो मैं अब गाड़ी में ही दे रहा हूँ, मूविंग कार में, तो हो सकता है कि लाइट और वो इफेक्ट ना आ पाए। यहाँ पे सीधा सा विषय पे आते हुए एक चीज जिससे हमको बाहर आना है, एक तो मेजोरिटी नॉस्टैल्जिया से बाहर आना है कि हिंदूज आर अ मेजोरिटी, दे आर नो मोर अ मेजोरिटी। ये एक फैक्ट है। ये नॉस्टैल्जिया से जब तक बाहर नहीं आएंगे, जिस वक्त हम पॉपुलेशन काउंट करते हैं, सो लेट्स से एन एक्सपेंडिंग माइनॉरिटी एंड डिमिनिशिंग मेजोरिटी, और ये डिमिनिशिंग मेजोरिटी और इसका जो लाइंस मीट होनी है वो कोई ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, हम टोटल पॉपुलेशन में बात करते हैं जिसमें मेरे जैसे भी हैं। अगर बच्चों की बात करें, अंडर 5 की बात करें, अंडर 2 की बात करें, तो शायद मुस्लिम परसेंटेज ज्यादा आ रही है अंडर 2 में या अंडर उसमें। यानी आज से 16 साल बाद, 18 साल बाद जो इलेक्शंस होंगी या 20 साल बाद जो इलेक्शंस होंगी, उसमें अगर कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं आता, रोहिंग्या नहीं आता, बांग्लादेशी नहीं आता, तब भी हिंदूज आर गोइंग टू बी अ माइनॉरिटी। और उसके बाद फिर आगे जो होना है ये सब पता ही है। तो एक तो ये जो मेजोरिटी नॉस्टैल्जिया है, लेट्स टेक इट एज अ डिमिनिशिंग मेजोरिटी एंड अ सेकंड लार्जेस्ट एक्सपेंडिंग माइनॉरिटी, और सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी एंड सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी। माइनॉरिटीज तो वो है 1%, 2%, 3%। जब आप 30% क्रॉस कर जाते हैं तो वो मेजोरिटी नहीं रहते किसी भी स्टैंडर्ड से। दूसरी चीज ये है कि जो आर्ट, एक साइंस एंड आर्ट है जो उनके पास, दैट इज ऑफ प्रीचिंग, पिचिंग एंड सीट्स। जहां पे जाना है, पहले तो बीच, आपके सिस्टम में बीच ढूंढना है कि यहाँ पे किला कहाँ से कमजोर है। चाहे अभी जैसे कश्मीर की कन्वर्जन की बात हो रही थी, पहले किसी को कन्विंस किया गया, एक अच्छी लुभावनी इस्लाम का चेहरा दिखाया गया और हमारे पास कुछ था नहीं, तो हम उसको नेचुरली उसको बिलीव करते गए कि जो वो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। एक चीज ये रही। दूसरी चीज मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ माइनॉरिटी मेजोरिटी के। मैं दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा। अब जब दिल्ली के स्कूलों में पढ़ा तो यहाँ पे मेरे साथ भी मेरे को बड़ा डिस्क्रिमिनेट करा गया, ठीक है ना। ऑल बीइंग ए सिख, मेरे को, अब वो करने वाली कौन थी? मेजोरिटी, ठीक है ना, हिंदू मेजोरिटी। एक, अब इसमें दो चीजें आती हैं, या तो मैं ये सोच लेता कि ये मेरे दुश्मन है एक, और या ये सोच लेता कि मेरे को अब सिख रहना ही नहीं। तो दोनों स्थिति में हिंदू सिस्टम के लिए बड़ा घातक था। अब ये तो रही, एक क्लास में एक बच्चा है 50 बच्चों में, अब उसमें 4 या 5 मुस्लिम बच्चे भी हैं जो खाली मेरे को प्रताड़ित नहीं कर रहे, वो मेजोरिटी को भी, वो हिंदू को भी मजाक उसका उड़ा रहे हैं कि तुम्हारे यहाँ तो 6 हाथ वाली देवी होती है, कभी देखी है तुमने? मैं अपने केस को साइड पे रखता हूँ क्योंकि मैं तो एक था, मगर वो जो 45 बच्चे हैं बाकी के, वो भी आगे से जवाब नहीं दे पा रहे क्योंकि उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। उसको घर से जवाब वो तैयार होके ही नहीं आया था। वेयरएज वो जो 4-5 बच्चे थे, नो दिस इज 1, 4, 4, 5 और एंड 45, तो वो जो 4 था वो एक को तो डोमिनेट कर ही रहा है, मगर वो 45 को भी डोमिनेट कर रहा है। तो ये क्यों जवाब नहीं था? क्योंकि उसको ये नहीं बताया गया कि भाई अगर 6 हाथ वाली देवी नहीं होती तो कोई घोड़े पे जाके चांद को भी नहीं काट सकता। उसको ये पता ही नहीं था। वो बच्चा प्रिपेयर्ड आ रहा था। जैसे वो कह रही थी अभी मेरे से पहले जो स्पीकर के, इतने 1000 घंटे उनको दिए जाते हैं।
मदरसा और नो मदरसा, भारत में या विदेश में ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पे पूरे 20,000 की आबादी में 5 मुस्लिम्स हैं, मगर दे आर ऑल्सो एज रेडिकलाइज्ड एज एनीवन एल्स। वो मदरसा भी नहीं गया, वो उसने इंजीनियरिंग करी है, बट वो क्योंकि जो इनपुट है और जो सीड्स हैं, जैसे मैंने कहा ब्रीच, पिचिंग एंड सीड्स, पहले तो ब्रीच करा, देखा, जब वो आपका हिस्सा बन गया, उसके अंदर जो सीड गया, मेंटल थॉट गया, जो इनपुट्स गया, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि ना उसमें मेजॉरिटी का उसको फर्क पड़ता है, ना उसको माइनॉरिटी का फर्क पड़ता है, ना उसको मदरसे का और ना उसको नॉन मदरसे का। ये नहीं कि जो मदरसे में नहीं पढ़ रहा वो शायद उसकी थॉट प्रोसेस कुछ और है। यू सी, एक वो होता है वन, देयर इज अ स्नेक, रेडिकल जिसे हम कहेंगे स्नेक, एंड देयर आर लिबरल्स, दे आर द ग्रास इन व्हिच दैट स्नेक हाइड्स। तो ये जो एक रिलेशन है दोनों के बीच का, इसको सब समझने की जरूरत है, उसमें मदरसा और नो मदरसा। अब जहां तक पिचिंग की बात है, पिचिंग की सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि बहुत जगह पे हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, 1000 साल 5000 साल पुरानी या 2000 साल पुरानी, अमंदा अभी जैसे था कि यहाँ पे बांग्लादेशीज हिंदूज आर बीइंग पिच्ड अगेंस्ट द इंडियन हिंदूज, क्योंकि वहां पे आके वो हिंदू नहीं रहा, वहां पे वो हिंदू था, वहां पे आके वो बांग्लादेशी हो गया। इसकी सबसे लाइव एग्जांपल जो मिल रही है द सिक्स एंड जिसे मैं तो खैर इन्हें मतलब वो केसधारी और मोना बोलता हूँ, मगर लेट्स फॉर द आजकल जो टर्म्स चल रही हैं उसमें चलते हुए अगर सिख और हिंदू की बात करें, सो दे आर बीइंग पिच्ड अगेंस्ट ईच अदर। अभी जो वो हुआ था, मैं इस समय 84 के जेनोसाइड की बात नहीं करूंगा क्योंकि उसके लिए वी नीड अनदर सेशन, द रीजंस, इट्स एन एंटायरली डिफरेंट, जो हमें दिख रहा है और जो हमें विलेंस दिख रहे हैं, उनके अलावा भी बहुत सारी फोर्सेस थी, और उसकी तैयारी कोई 1 साल में या 2 साल में नहीं हुई थी, और जैसे पंजाब के सेपरेटिज्म की तैयारी कोई 2-4 साल में नहीं हुई थी, ये 1970 से शुरू हो गई थी, और उसमें जो प्लेयर्स थे वो एक फिर किसी उसमें आएंगे। अब ये पिचिंग की और सीड्स की और ब्रीच की बात हो रही है, मतलब इसमें मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे में एक टर्म यूज होती है गलुगारा, गलुगारा, दैट मींस मैसेकर। तो ये 1962 में भी हुआ, सॉरी 1762 में भी हुआ, 1746 में भी हुआ, इन विच thousands and thousands were massacred। और जब पार्टीशन हुआ 1947 का, उसमें स्टैटिस्टिक्स हमारे पास गलत हैं अभी भी। अगर परसेंटेज वाइज देखा जाए तो सबसे ज्यादा सिखों का लॉस हुआ। इनफैक्ट इट वाज पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब। तो जिसे हम पार्टीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब था। तो इन सब को देखते हुए अब हमको अगर सॉल्यूशन की तरफ हम बढ़े कि ये सारी चीजें ये हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक तो जो हमारे को जो इनकी जो साइंस एंड आर्ट दे हैव डेवलप्ड ऑफ ब्रीचिंग एंड पिचिंग, उसका हमारे पास काउंटर होना चाहिए। सो वी शुड बी रेडी टू लिसन टू ईच अदर। और छोटी सी जो सबसे बड़ा, अगर आप एक छोटे अगर हम राइट्स देखें जो हुए, जो मैसेकर्स हुए, सिखों का मैसेकर गुजरात में एक बहुत बड़ा हुआ था 11 जनवरी 1948 को। गुजरात मतलब एक पाकिस्तान में एक डिस्ट्रिक्ट गुजरात है, नॉट द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। 1600 पीपल वर किल्ड इन ब्रॉड डे लाइट। तो इस तरह के ऐसे हजारों जेनोसाइड्स हुए हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हम इन जेनोसाइड्स को, इसको हिंदू जेनोसाइड और सिख जेनोसाइड करके देख रहे हैं। ये एक बहुत एक दुखदायी स्थिति है। और जैसे अभी पिछले स्पीकर रविरंजन जी को 2 मिनट के लिए पॉज करना चाहूंगा, बिकॉज वी हैव टू गो बैक टू सुमेंदु जी। But my little point to the audience that is listening to us, there are number of historical things, there is not lot of data। ये डेमोक्रेसी है, हर एक की वोट एक है। आपको अपने जो आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहे है मेरे पास।
आपका हेडफोन को चेक कीजिए सर। ब्रदर तो माय लिटिल रिक्वेस्ट टू द पीपल, क्योंकि 2 साल 3 साल से जूम चल रहा है और ये पहली बार हम अपने जो स्कॉलर्स को, हम अपने एक्टिविस्ट को पहली बार नहीं सुन रहे हैं। My repeated request to people who are active in different groups is that is there a way we can tabulate this data जो सरदार रवि रंजन सिंह जी शेयर कर रहे हैं, जो सुमेंदु जी शेयर कर रहे हैं, because ये these people are on the ground. What we can do for these people, for our activists, for our frontline people, is the question to us, to you, to me, audience of Sangam Talks, Global Hindu Council, Indus University. We will be coming back to Sardar Ravi Ranjan ji. Sumendu ji has been waiting. So Sumendu ji, again through this platform, please, Sumendu ji, if you can unmute yourself. I'll like to be short and brief here, क्योंकि मैं कहीं in a moving car और मैं आगे कहीं फंक्शन जी पे जा रहा वशिष्ठ जी, हूँ। मुझे लगता है एक बार सरदार रवि रंजन जी को अपना पूरा फिनिश कर देना चाहिए, बिकॉज ही वाज मेकिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन आफ्टर दैट इफ सुमेंदु जी Sure. आफ्टर सरदार रवि रंजन जी। जी जी, आप जी। प्लीज कंटिन्यू कीजिए। दूसरा ये जैसे पहले लर्नेड स्पीकर ने जैसे बोला कि हमारे पास सेकुलर जब हो जाते हैं तो जब शुरू से आप बता रहे हैं कि सब धर्म एक है, मजहब एक है, तो ऑल ऑफ अ सडन यू कम नो ये एक नहीं है, तो वो प्रोग्रामिंग जो ऐसे हो चुकी है कि वो कोई भी होगा वो नहीं मानेगा। मतलब हमारे को भी अचानक एक दिन, मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूं, क्योंकि हलाल की वजह से जो हमें नुकसान हुआ है, पूरी इकोनॉमी टेक ओवर हुई है। और अभी इसका जो रिसेंट है हलालाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस, मतलब एक बहुत अजीब टॉपिक है। पीछे कोई ये 8-9 दिन पहले की बात है कि गुजरात की एक इंश्योरेंस कंपनी ने जो हॉस्पिटलाइज हुआ था आदमी, उसको इसलिए देने से मना कर दिया, कंपनसेशन जो उन्होंने देना था, अमाउंट, इंश्योरेंस अमाउंट देना था, बिकॉज यू आर अ वेजिटेरियन। वो आदमी कंज्यूमर को, आई एम अ नॉन वेजिटेरियन, बहुत ज्यादा नहीं लेता, बट स्टिल आई एम अ नॉन वेजिटेरियन। तो अब इस सारे में क्या हुआ कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाता है, और कंज्यूमर कोर्ट इंश्योरेंस कंपनी को कहती है, एंड इट्स अ गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी, नॉट अ प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, हम कहें इसमें कॉर्पोरेट का पैसा लगा है, क्रिश्चियंस का पैसा लगा, ऐसा नहीं है, सरकारी कंपनी है। और कंज्यूमर कोर्ट कहती है कि नहीं नहीं, आप इनको कंपनसेशन देंगे एंड द मैटर इज ओवर। दिस इज नॉट ओवर, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी टू टर्न वेजिटेरियंस इनटू नॉन वेजिटेरियंस और वेजिटेरियंस इनटू हलालाटेरियंस, क्योंकि आज जो मिल रहा है वो हलाल ही मिल रहा है। So economy that is related to the economy, these nitty-gritties जो breaching की हैं, we have to understand. So they breached into our insurance system. अब जब 4 लोगों को compensation नहीं मिलेगा, या कंज्यूमर कोर्ट कहती नहीं नहीं आपकी बात ठीक है, ये तो वेजिटेरियन है, इसको कैसे मिल सकता है, तो वेजिटेरियन होना इतना बड़ा एक पाप हो गया कि अब होगा क्या कि जो नहीं भी होगा, जो वेजिटेरियन भी होगा, वो पब्लिकली डिक्लेयर करना शुरू कर देगा आई एम नॉन वेजिटेरियन, और 5-7 साल में, 10 साल में। सो दीज आर द कॉन्स्पिरेसीज वी हैव टू अंडरस्टैंड। और जहां तक ऐसा बात नहीं कि सेकुलराइजेशन का सिर्फ हमारे को ही नुकसान पहुंचा है। जिन्हा की जब बेटी थी, क्या नाम, दीना, तो जब उसने उनसे ये बोला कि मैं एक पारसी से शादी कर रही हूँ, तो जिन्हा साहब का कहना था देयर आर थाउजेंड्स ऑफ handsome Muslims, couldn't you find one? She said there were thousands of good looking Muslim women, couldn't you find one? तो जिन्हा का भी वहां पे मुंह बंद हो गया था, एंड अनफॉर्चुनेटली उसको ये उसके लिए अनफॉर्चुनेटली उसको ये कड़वा घूंट पीना पड़ा, बिलीविंग दैट ही वाज अ मुस्लिम। अगर वो ऐसा था, हालांकि ही वाज अ मुस्लिम, ये अपने में एक अलग विषय है। तो अब हम इसको चीज को कंक्लूड करते हुए अगर हम कहेंगे तो जो आर्ट ऑफ ब्रीच है वो हमारे पास नहीं है। वी हैव टू लर्न आर्ट ऑफ ब्रीचिंग।
आर्ट ऑफ पिचिंग एंड आर्ट ऑफ सीडलिंग। तो ये हम तीनों ही चीजें नहीं डाल पाते, कर पा रहे हैं। और ये हर उसमें हमारे को अब वो आर्ट ऑफ ब्रीचिंग कैसे सीखा जाए, हमको देखना चाहिए कि कौन कौन सी उनके अंदर कौन कौन से ब्रीचेस है। ऐसा तो नहीं कि उनके अंदर कोई ब्रीचेस है नहीं, तो उसको कैसे हम उस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं अपने पक्ष के लिए। ठीक है, उसमें उनका भी भला होगा, उसमें कोई बात नहीं है। उन ब्रीचेस में कोई अगर कॉपरेस्ट है उनमें तो उसको वो करना, बट वी हैव टू मेक इट इन अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड मैनर। बस यही मेरा कहना था। और आप क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि आई एम ऑन वे, आई एम सो सॉरी, मैं No, it's कहीं not an issue. शादी पे पहुंच रहा हूँ, तो जी, जी, कोई इसलिए बात मैं नहीं। जी जी जी, जी मेरा आप क्वेश्चन। सवाल आपकी बात से बहुत रिलेट होता हुआ ही है कि इस समय एक कॉन्स्पिरेसी ये भी चल रही है कि सिखों को और हिंदुओं को अलग दिखाया जाए, क्योंकि जी जिस जी तरीके से अभी पाकिस्तान में भी एक गुरुद्वारे को उसमें बदल दिया गया, मॉस्क में बदल दिया गया, तो वहां पे भी ये कॉन्स्पिरेसी इस तरीके की चल रही है कि हिंदू और सिखों को अलग किया जाए ताकि उनकी ताकत को कम किया जाए और उनमें भी एक डिवीजन क्रिएट कर दिया जाए। तो जी। इससे इससे हम कैसे लड़ सकते हैं, या इस चीज को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि आप उसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं भी उसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती जी, हूँ। तो इसमें मैं ये एक्सपेक्ट, जब हम हाँ साथ हैं तो कोई और हमें क्यों तोड़ने की कोशिश कर रहा है, हम क्यों टूट रहे हैं, मेरा ये सवाल और उसका सोल्यूशन। जी, अभी जैसे जो गुरुद्वारे में हुआ है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी मैं एक फिर कभी इसको क्लियर करूंगा कि जब हम हिंदू और सिख टर्म यूज करते हैं, ये अपने में ही डिवाइडिंग है। देयर आर सिर्फ ये केसधारी और मोना शब्द पंजाब में इस्तेमाल होता था, यानी हिंदू तो ओवरऑल एक शब्द हो गया, उसमें केसधारी और मोना नाम से शब्द इस्तेमाल होते थे। पर धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, वो शब्द, आज मोना शब्द लुप्त हो गया। किसी को शायद आज की जनरेशन को पता भी नहीं होगा कि मोना क्या होता है। मोना जो समझते हैं वो समझते हैं, जिसने सिख ने केस हटा दिए वो मोना हो गया। मोना मोना एक तरह से जिस समय मुगलों के खिलाफ एक पूरी मूवमेंट पंजाब से चली थी, तो कुछ लोग केसधारी मेरे जैसे सामने आ गए और उन्होंने हर चीज को डिफाई करा। यानी अगर वो कहते हैं तलवार हथियार नहीं रखेंगे तो हम हथियार रखेंगे ही, वो कहते हैं आप घोड़े पे नहीं चलेंगे तो हम घोड़े पे चलेंगे ही, ठीक है ना, वो कहते हैं आप अपना नाम सिंह नहीं रख सकते या राजकुमार नहीं रख सकते तो हम यही करेंगे। सो इट वाज, ये वो लोग थे जो सीधे सामने आ गए टक्कर पे। इसके साथ साथ एक, इट्स लाइक एन आर्मी इन यूनिफॉर्म, मगर हर आर्मी इन यूनिफॉर्म को एक सिविल चाहिए होती है। आज भी सिविल हमें चाहिए। अगर कोई आर्मी जा रही है तो उसको पैंट्स चाहिए, शर्ट्स चाहिए, जूता चाहिए, हथियार चाहिए, दवाई चाहिए, सब चाहिए। मतलब सिविल सपोर्ट के बगैर कोई आर्मी और सिविल जो है एक दूसरे के पूरक है। तो उस समय जो लोग सीधा सामने आए वो केसधारी हो गए मेरी तरह, और उन्होंने सीधा चैलेंज करा कि मतलब कफन बांध के मैं आया हूँ, यू कैन आइडेंटिफाई मी। मगर उसके साथ एक बहुत बड़ा ये ग्रुप था जो उसको सपोर्ट कर रहा था मौन रूप से, जो खुद नहीं हुआ था। जैसे अगर पंजाब से अगर घोड़े आ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं खेतों को वहां से तो पानी रख के नहीं ले आएंगे घोड़े का लिए, जो घोड़े ने पीना या आदमी ने पीना या दवा। तो वो जो लोग उससे सपोर्ट करते थे वो मोने कहलाए। So we have to understand before this thing, we have to go back to that situation कि उसमें कोई डिफरेंस ना हो, और हर बड़ा बच्चा उसको मोना मतलब अपने घर का जो एक मोना परिवार था अपने बड़े बच्चे को आर्मी में देता था। तो ये इसको मैं इस तरह देखता हूँ। मगर अब जब बच्चा ही एक है या एक भी नहीं है तो फिर कौन आर्मी में देगा और कहाँ से होगा। तो अभी जो जैसे पाकिस्तान में हो रहा है, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे जितने मोने भाई हैं सिखों के साथ साथ उनको भी इस प्रोटेस्ट में उनसे ज्यादा आना चाहिए कि ये जो हो रहा है, गुरुद्वारा वहां पे कन्वर्ट करा गया, वहां पे परसों एक सिख बच्चे के साथ अत्याचार हुआ, ये सब हम नहीं सह सकते। सो वी हैव टू, और ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई है इसके लिए एक बहुत बड़ा, इट ऑल स्टार्टेड विद ये 1970 से इसको ज्यादा बल मिला। क्योंकि हम इसको 80 से समझते हैं बल मिला, मगर ये 10 साल पहले कॉन्स्पिरेसी शुरू हो चुकी थी और 71 के बाद ये बहुत ज्यादा शुरू हुई। तो ये चीजें हैं, वो एक ऑल टुगेदर, उसके लिए एक और सेशन चाहिए कि वो कैसे शुरू करी, किसने शुरू करी, और अब उसको
इस अलगवाद को खत्म कैसे किया जाए. I mean, it cannot be just carrot and stick policy. It has to be this thing. तो मैं क्योंकि थोड़ा सा मैं क्षमा इसलिए चाहूंगा कि मेरे को कहीं पहुंचना है और गाड़ी इज जस्ट आउटसाइड द वेडिंग दिस थिंग. तो फिर भी अगर आप कुछ और पूछना चाहें तो. नहीं, बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और आपसे आगे 1971 की जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है उस पर भी मैं जरूर समझना चाहूंगी. तो आई डेफिनेटली टॉक टू यू अबाउट दैट. तो आप प्लीज अपना हाँ, मैं सुमेंदु जी की तरफ वापस से आना चाहूंगी. जी And धन्यवाद जी. if you are here. जी सुमेंदु जी. तो वशिष्ठ जी ने आपसे एक सवाल पूछा था. तो इफ यू हैव योर आंसर प्रिपेयर प्लीज गो अहेड. शायद सुमेंदु जी का अभी इंटरनेट कनेक्शन वीक है. आई कैन नॉट सी हिम. यस ही इज बैक. सुमेंदु जी क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो. जी मेरा आवाज सुनाई देते थे. हाँ इट्स बोलिए. क्लियर. जी. अच्छा, आप क्या सवाल, आप क्या क्वेश्चन आपका क्या था? नहीं, मेरा क्वेश्चन नहीं आवाज था. नहीं. आपसे वही पूछ रही थी कि जो भी आपसे वशिष्ठ जी ने एक सवाल पूछा था. तो हैव यू आंसर्ड, इज योर आंसर प्रिपेयर्ड? जी. सोमेंदु जी, मैं ये पूछ रहा था कि हर वेबिनार में V10 की हो क्या रहा है, आगे करना क्या है, कैसे करना है, क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, लीड कर रहे हैं और यहाँ जो आपकी ऑडियंस है वो सेक्युलर ऑडियंस नहीं है, वो ऑडियंस जिससे फर्क पड़ता है, who is affected by what is going on with Hindus. A lot of us might want to know what's happening in other areas, but most of us who are here, they already have a fair idea that what happens when Hindus are 90% and 10% are other communities. 70% so water is already above the danger mark. It's already above the danger mark. I mean, after when it's 70%, 10%, 10 years later, we are already, have the सबसे platform. पहले मैं क्षमा चाहती हूँ you have कि वॉइस. हाँ, देखिए, सॉल्यूशन के बारे में बात करें. सॉल्यूशन बांग्लादेश का, अगर बांग्लादेश में स्पेशली बात करें तो मैं कहूँगा बांग्लादेश में हिंदू के लिए अलग लैंड होनी चाहिए. अगर हिंदू के लिए लैंड नहीं होगा, सॉल्यूशन नहीं है. और बांग्लादेश में मैं बहुत हसीना बिना जितने एमपी है, मंत्री है, आवामी लीग का लीडर है, उनको साथ भी हिंदू के अत्याचार के बारे में भी बात किया है. वो मानते नहीं है कि बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार हो रही है. वो बोल रहे हैं कि इंडिया में मुसलमान अत्याचार हो रही है. कुछ दिन पहले बांग्लादेश का डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर नाम शाहरियार आलम, उनको बातचीत हुआ था, व्हाट्सएप कॉल में उनको बात हुआ था कि बांग्लादेश में हिंदू को अत्याचार हो रही है. आप 99% हिंदू आवामी लीग को वोट देता है. अगर हिंदू बांग्लादेश में नहीं रहेगा तो आवामी लीग तो नहीं रहेगा. हिंदू में वोट में तो आवामी लीग है. मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मेनली आवामी लीग को वोट नहीं देता है, वो बीएनपी को वोट देता है, जातीय पार्टी को वोट देता है. मैं कहाँ उनको, तो उनको अगर हिंदू को रुकता करिए, उनको जो अत्याचार हो रही है वो आप रुके. तो उन्होंने कहा कि यहाँ में आप मुझे बोल रहे हैं कि वो आप फेक न्यूज ये कर रहे हैं. बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार नहीं हो रही है, परंतु
इंडिया में मुसलमान अत्याचार है। समस्या यही है, हिंदू के लिए अलग लैंड। और क्या होता है, हमारा डिस्कशन ठीक है, वर्चुअल प्रोग्राम में डिस्कशन होता है, बहुत बार अटेंड किया है, हम भी किए हैं वर्चुअल प्रोग्राम, वेबिनार, वॉइस उठाती हैं। लेकिन ये हमारे जो पार्लियामेंटेरियन है, मिनिस्टर है, इनको द्वारा उठाए पार्लियामेंट में, वो ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अच्छा हो। और सबसे अलग अलग मुद्दा है कि वो बड़ा बड़ा मूवमेंट करना, बड़ा बड़ा मुझे ऐसा लगता है कि शायद सुमेंदु जी का इंटरनेट वर्क नहीं कर रहा है, तो आई वुड लाइक टू मूव टू द्विज जी, हु इज Yes, okay. Just one small thing. मेरा आवाज आ रही है क्या? जी जी हेलो? जी, आपकी आवाज आ रही है। तो सुमेंदु जी, देखिए, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता बांग्लादेश हूँ में अत्याचार हो रही है, लेकिन बंगाल में भी हो रहे। बंगाल में तो कोई रोक नहीं पा रही। ये तो इंडिया में है, बंगाल तो इंडिया के अंदर में है। यहाँ में तो बहुत अत्याचार हो रही है। बांग्लादेश एक में आप नहीं समझते हैं कि बांग्लादेश बॉर्डर एरिया में कितने डेमोग्राफी चेंज हुआ है। तो मैं 1 मिनट आपसे ना एक चीज पूछना चाहूंगा। द्विजा जी नमस्ते, जय श्री राम, थैंक्स फॉर जॉइनिंग फ्रॉम इंडोनेशिया। Yeah, I'll quickly ask one question, Sumendu ji. The Hindu public is not like this, that who will come to the road because one person has been attacked. This is the ideal situation. Ideally, we want to believe that one person gets killed, gets hurt, we will all be on the road. This is our ideal dream. We all live in hopes and dreams. Here, riots happen, people close themselves, lock themselves into the door unless it's their daughter, sister, mother, father. There have been incidences of Hindu kids also not going out for the cremation of their own parents in COVID. So I understand that Hindus, इनको उठाकर बाहर खड़ा करना, पॉलिटिकल और धार्मिक गुरु, हमारे पास दो ही तरह के लीडर होते हैं, पॉलिटिक लीडर, धार्मिक लीडर. So I understand both of these leaders are, for majority of Hindus, they are sleeping. But do you think, Sumendu ji, a picture like Kashmir Files, we could make something like Bengal Files? Again, I will request to all the listeners, I know a lot of suggestions will be there. We cannot depend upon one Modi ji, one Yogi ji, one Vivek Agnihotri ji, one. We are 1 billion plus, maybe 1.1 billion Hindus. How can we depend on one unless we are not ready to become that one? But Sumendu ji, do you take this, because all data, we send so much of messages on WhatsApp, but nobody has a data. How many Hindus killed in Bengal in last 10 years, which we can send to the ministers who think, no, Hindus are safe in Bangladesh. Is there some one person through this platform? My intention, the intention of Global Hindu Council is to go a step ahead. Few million Hindus sending WhatsApp messages to each other, same message, but not even 1 or 2 or 5 groups to compile the data. What is happening to Hindus in Nepal? What is happening to Hindus in Kenya? What is happening to Hindus in Indonesia, Bangladesh, Pakistan? There are affluent people. There are thousands of Hindu organizations. Not even one organization could come to think, let us compile data, irrefutable data, and let us go to all these big watchdogs called United Nations, called EU Parliament,
Oxford University, where it is coveted, where our people, they lose their Hindu strand to act secular in Cambridge and Oxford just because they have been invited there. So, I mean, if we don't organize our data, sending information here and there doesn't have results. My point is, Somenduji, if you are still there, do you think that we should start compiling the death or the murders of people, or some of our listeners who are very capable, very connected? So, Somenduji, if you are still here, kindly please share your parting thoughts. I think Somenduji is disconnected, so we will join our hands to welcome Dvijaji. I wish his father recovers soon. His father is not keeping well. Our young friend Rutvij, he shared this information and I shared it to some other people. So, when I was growing up, I thought Hindus only India. Then I had to really expand the eyes of my mind. The mind can be trained to do anything, but only when the eyes of the mind open up, you see, Bhagwan Krishna said a beautiful line. For your country, you should sacrifice your samaj, community. For your community, you should sacrifice your family. For your family, you should sacrifice yourself. This is the knowledge of Bhagavad Gita. The God himself came. Only in Bharat, the God has been here. No other place on the planet has been so lucky. And we Hindus are so unlucky that this message of God called Bhagavad Gita, the divine song delivered by the Bhagwan himself, lying next to our beds, lying in our homes, has not been able to inspire us, and it's not been able to inspire us because we don't open it. So, going with that logic, I see another brother in Dvija, another Hindu brother, wherever you are, wherever in the world you are, my Hindu brothers and sisters, my heart is connected to you through the beauty of Sanatan, which gives us the message of harmony with all elements and give us the strength to protect this harmony from all wrongdoing. Jai Shri Ram. Welcome, Dvijaji. Om Swastiastu. Namaste, Namaskar. Thank you very much for the opportunity, all my brothers and sisters around the world. First of all, I would like to introduce myself. My name is Dvija. My Balinese name is Made Dvija. So nice to see you all. And this is my first time to join this great conference. Well, first of all, I would like to brief you all about Bali Hindu and Indonesia Hindu, what's going on so far, and what we are facing right now, and what will be in the future of the Hindu in Indonesia, especially that will influence and also reflect the global Hindu community. And I think this conference will enhance my understanding and also put myself in a wide perspective to understand each other. Brothers and sisters, now I would like to share to you that in Indonesia, Hindu in Indonesia, the population, based on population, we are 4,400,000
4 million, so almost 5 million population are Hindus compared to 350 million people of Indonesia. So we are only almost 5 million, according to the last 2 years data, 2021, 2020. So based on this number, we learn that we experience and also we understand ourselves that Hindu in Indonesia is minority, but anyway, we are still proud of the foundation of this country, Indonesia. We have our basic principle. It's named Pancasila, and also the motto of Indonesia, the Republic of Indonesia. The motto is Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangarwa. There is only one truth. There is no second truth. So Bhinneka Tunggal Ika also means unity in diversity. That was taken from the Sutta Soma manuscript during the Majapahit kingdom ruled the Nusantara, the ancient name of Indonesia, Nusantara. The value of Hinduism already spread out all over the country, and however, nowadays we are facing a challenge, a great challenge. First, the challenge of Hindu in Indonesia is conversion. Conversion is taking a great challenge in Indonesia. The conversion from Hindu to Muslim, Hindu to Christian. Dvijaji, is there something called love jihad in Indonesia? You are absolutely right. Love jihad. Love jihad is first conversion. First conversion is between ideology, and also they try to attract the Hindu people to become Muslim or Christian, and also the second one is love jihad. The Muslim man or the Christian man, they will marry the Balinese Hindu or the Indonesian Hindu to be their wife, and absolutely their children, their wife will be the new religion, either Hindu, either Muslim or Christian. This is a challenge, and we have our constitution. We have our national constitution, article number 29. Actually, the nation, the state protect the people of Indonesia religion and belief. However, practically on the field, on the remote area, everywhere we are facing a discrimination in all sector, economic sector, politics sector, etc. The love jihad also a strategy that implemented by Muslim and Christian, and the love jihad promise 27 beautiful women if they can marry a Hindu woman, the heaven is a guarantee.
and they will be accompanied by 27 beautiful women in the heaven. That is the promise of the Muslim by doing the love jihad. That is external problem. Now, I would like to share to you, brothers and sisters, about Bali. On my background, the virtual background is one temple, the famous temple in Bali. Is the name of the temple is Hulun Danu Temple. Hulun Danu Temple, located floating on a big lake named Danu Bratan or Lake Bratan. It's located in Tabanan Regency in the tourist destination. But very sad to say that surrounding the area of this lake and this temple is almost 90% Muslim. Almost 90% Muslim. They have a big mosque, the big holy place for Muslim, just maybe 200, 400 meters from this temple, from this holy temple of Hindu, the Hulun Danu Temple. Now, I can say that Bali as the last protector of Hindu in Indonesia is now under siege. Is now under siege. As you know that the island of Bali, we are only 5,000 something square kilometers. The width of the length of the island, and on the west side we have Jawa. Jawa is majority Muslim, and on the eastern side of Bali is West Nusa Tenggara is Muslim. And then economically, Bali, now I'm living in Bali. I was born in Bali, living in Bali. The Balinese has and facing a great challenge in economy, because mostly people immigrated from Jawa to Bali, from West Nusa Tenggara to Bali. They are looking for another future, for their future, they are working in Bali, and especially Bali is famous with as the tourism sector. We are famous tourist destination, and now the comparison between original Balinese community, the Balinese Hindu, compared to another community from Muslim, from Christian, from Buddhist. We are okay at the moment. We are still close to 75%. However, within next 5 years, next 10 years, we are afraid that it will be 50-50%, 50 to 50%. So, in terms of number, nationally, Bali, Hindu is minority. In terms of number, now, but the small island, Bali Island, which is 75 to 80% Hindu, is now getting closer, attacked by another religion, by love jihad, by missionaries, by Christianity. They built like for the Christian, they are implementing. They are doing like a soft strategy to do their conversion, like they
the church is decorated with a Balinese ornament, like like the church will be decorated with the Balinese ornament to attract the Balinese Hindu to come to the church. And also they are using whenever the Christian going to the church on Sunday, some of in a certain village in Bali, they will wearing a Balinese costume like this, like my hat this, and also with the Balinese sarung. They will go to the church in order to attract. This is a part of their strategy, their marketing strategy. That is the Christian. And Muslim, as we know that they are majority in Indonesia, and also Bali is a province that rely also with the central government in Jakarta. Of course, politically, we have to obey. We have to follow the rule from Jakarta politically. However, I tell you, ladies and gentlemen, brothers and sisters, traditionally Bali was built. The community was built by our holy priest, by our Mahaguru Maharshi that came from India to Jawa, to Bali, from Jawa to Bali, like Maharshi Markandeya, Maharshi Agastya, and also Maharshi from Jawa, like Maharshi Kuturan, Maharshi Baradah, and so on, and also Maharshi Pasupati. They protect Bali by built many temples. So that is why Bali known as the island of 1,000 temples. But my perspective right now, since we are facing this challenge, many mosques is now being built in Bali. Small church and also a middle size of church, and also middle size of mosque for Muslim. But the Balinese temple, the Balinese Hindu temple, we name it Pura or Mandira or Mandir or Pura or temple. But by the ancestor, they built in the forest, on the top of the hill, on the top of the mountain. We are doing the offering every day, every time. Our offering, the Balinese offering, is the implementation, the real implementation of the Vedas. We are never, most of us never know the Bhagavad Gita. We never read the Bhagavad Gita. We never read the Vedas, the Chatur Veda. But we implement it. We have implemented the real Veda and Bhagavad Gita in our daily life. We have a local value like Gita Karana. A very good point. Yeah. Can I interrupt, because I have two questions? Please. In fact, three questions. The first one is, are you aware of this word called Al-Taqiyya? Have you heard this word Al-Taqiyya? Agastya? Al-Taqiyya. Taqiyya. It's a Urdu word. Yeah. Have you heard this word? Satya, yes, but the first word, can you please? Lying or impersonation to spread Islam, like wearing same dresses like Balinese Hindus or Balinese Christians,
which Muslim men do here in Hindu areas, and also they do in Kerala, because one of the Kerala politicians, Mr. P.C. George, he made a statement that Christians are safer in a Hindu Rashtra. So, do Indonesian Christians also say that they are safer in Bali because Bali is more Hindu? Do the Christian people say like this? Is there a Christian population in Indonesia? They are number 2 population in Indonesia. Number 2. Oh, First okay. Muslim, second Christian. We are number 4. We have 6 religion that officially recognized by the government of Indonesia. So my question is, do the Indonesian Christians feel threatened by love jihad? Does it happen? Yes, some of them. Yes, some of them, because Muslim and Christian in Indonesia, they are from long time ago, from centuries until today, they are a great competitor. Everywhere, not only in Indonesia, they are a great competitor. Both of them fight each other, maybe in some countries, and also in Indonesia. For example, when the earthquake in West Java, in near Bandung city, there was a donation from the Christian people to the people of Bandung city, Cianjur district. But unfortunately, the donation, they have the label of donation from Christian organization. They write down the on the tent, on the shelter. Bandung or West Java is mostly 95% Muslim. The people there, of course, refused the donation and destroy the label of Christian on the tent, on the shelter. Between Muslim and Christian in Indonesia, sometimes they fight physically. We can see, we can watch, we can watch them. But whenever we are talking Muslim and Hindu in Indonesia, mostly they are doing a soft strategy to convert us. Soft strategy like love jihad, of course, very soft but very hard. Love jihad, and also they try to convert us by book, by gifts, speech, and by propaganda in the social media as well. My second question is, every month in India, by newspaper and news links, we see at least 20 love jihad cases, 20 at least monthly, where the girl has been either cut into small pieces and put into a suitcase and thrown on the road. Do you see some such kind of brutality also in Indonesia with Christian girls or in Bali with Hindu girls? And with this question, I would like to invite Raj Patelji, who's the producer of a movie on conversion. Can we request Rajji also to unmute himself, because he is the best person to talk about this. Yeah, and because he is based in US
and he's also interested to know the situation. Yes, namaste, Vasishji and Vijayaji. What I have through my tenure with movie making, I have came across many love jihad cases that we had to study, but I would like to know specifically what Vasishji was asking. A similar question is, what form of love jihad that you see in Indonesia compared to like in India, it's very brutal love jihad cases that we see. Do you see specifically Muslims having fund, having trained, target Hindu, a certain age group, and what they do with them, or how do they target? So essentially, if you could give an example or two, or how the love jihad forms are in Indonesia, that would be very beneficial to learn. Thank you. Thank you, Raj Patel ji. So hello, I would like to say hello to you. Yes, namaste. Namaste. Well, before I proceed to the love jihad, when we learn from the Bali bombing 2002 and also 2005, the Muslim targeted Bali because they thought that Bali is a dirty island. It's a dirty island according to their belief. Bali full of sin island. Yeah. Then they believe that if they fight Bali, they will win Indonesia, because Bali is the last capital of Hindu in Indonesia. So Dwajji, I have to just add a little bit more interesting word. Do you know this term called Ghazwa-e-Hind? So is there a term called Ghazwa-e-Bali? You know Ghazwa-e-Hind? What does the term mean? if you can write it down on the chat group. Yeah, Ghazwa-e-Hind, if you can write down 1 second. So it basically means destroy the last Hindu land, which is India. 1 second, Ghazwa-e-India, somebody has written. I'm sorry, this is not familiar in my perspective, not familiar in Indonesia. The principles like very same. What you say, it's a dirty land and they have to finish it, or probably they have to finish all the men basically and make the women sex slave is a very, the story sounds so familiar. The story sounds so familiar. It goes 1000 years in the mind of Hindu conscience. Yes, please go ahead. I just wanted to see if there's a familiarity with the term, but this is Ghazwa-e-Bali that you're talking about. Yeah. Okay. I let me continue with the concern of Raj Patel ji regarding the love jihad. The form of the love jihad is, of course, they will marry the Balinese Hindu, the Balinese Hindu woman. Don't forget that the Balinese man also experience the love jihad, because the woman, the Muslim woman, they will fight the love and ask the man to follow their religion. So the man will be, the Balinese Hindu man will follow the woman that they love to be a Muslim, not just women.
they will do everything to convert us, not just between men toward Balinese woman, but also Balinese men to be converted to Muslim or Christian. And from the Muslim or Christian perspective, this is the winning atmosphere, the winning atmosphere that they can what we say it, they can ask the Balinese, the Balinese Hindu to be their religion. But in a small number, some of Muslim or Christian also they are converted to Hindu because of marriage, and some of the foreigners as well. They are very interested with the Balinese local value, the Vedas value like meditation, yoga. They interested and they love Bali, to stay in Bali. They became Hindu. They are doing the Sudiwadani ceremony in Bali to be a Hindu. Thank you. So I would add to that, like Malaysia also has similar thing where in their love jihad, the Muslim girl will marry to a Hindu man, and they would want him to convert to Islam. Incidentally, in our movie, one of the character was a victim of love jihad from Malaysia. His wife was a Muslim. They had a child, and she was fighting tooth and nail to convert him. He did not. He gave her divorce. He came back to India. So that's one real example that I've seen. In India, we don't see that too much, where Muslim girls will marry to a Hindu boy and want him to convert to Islam. Rather, the cases that we see is Muslim woman when marries to a Hindu man, more often she's marrying to a Hindu man to become a Hindu, to accept a Hindu religion. But the form that you're describing in Indonesia is pretty much prevalent in Europe, in US, Canada, North America, where a Muslim girl marrying to a Christian or non-Muslim boy would want him to convert to Islam. And they are even trained to such an extreme, I'll say, in US, where the Muslim girls are trained to wear short skirt. They'll go wearing short skirt as like an American girl, trap a non-Muslim boy, and then force him to convert. They will be so much in love that he would be compelled to, for the sake of love, he would convert himself. There was one case I was working with where there was such a case that he would do whatever, for her to marry. So it's good to know that there are different forms of love jihad, and clearly the Muslim man married to Hindu girl is the most prominent form of love jihad. So thank you. So what it seems, Rajiv, because I would want you to be in the audience, because this topic is close, and the next session is going to be a little bit about answers. So after Dvijaji, we will be calling Mahesh Vasuji, who has been documenting cases of atrocities. One of the very few people. But Dvijaji, also, are there people or are there teams who are working upon tracking cases of love jihad in Indonesia? Because if we don't have, you should start. Otherwise, tomorrow, when the things get little more worse, you will have nothing to tell, and everybody will say, no. It's only every religion has some bad people. Even though
some religions think that the whole city is a sin city because Hindus live there. Is itself like if you call a certain color by its name, UN will put a label on you that you are racist. But if you put a whole city in that bracket as a sin city, UN will look on the other side. There's a term called Sabdupan in Bali. Can you throw some light on the prophecies if it's relevant to this? Otherwise, we can take it in session tomorrow. If there is relevance to how the condition of Hindus is affected, kindly shed some light. You are mute, Brijaji. Oh, yes. Ji, can you please tell me the point of your concern and your question, please? The point. Yeah. There's a term called Sabdupon. Sabdupun. Let me check. Vashishti, should I speak about it? I've read about Yeah, it. please. I think Dvijaji will probably get the relevance. Ji, Dvijaji, so there is a prophecy of a sage who was called Sabda Palon. That is the name, if I'm not pronouncing it wrong. So he was he made a prophecy, and he was a mystic priest. He said that Hinduism will return to Indonesia in 500 years. So do you think, because Indonesia today is the largest Muslim majority country, so do you think that his prophecy will come true? That is the question. Very good question. Well, Sabda Palon and Naya Genggong is the history we took from the history of Majapahit, the fall of Majapahit kingdom, great kingdom. Sabda Palon statement, like you said, Angarwalji, I'm sorry, 500 years the Hinduism will be back to rule the world like that. Well, not just Balinese, the Javanese people believe on this prophecy. They believe. Now there is a silent movement from the Javanese people. They are back to their Dharma as a Siwa Buddha belief, because before name Hindu in Indonesia, the tradition, the belief called Shiva Buddha. Shiva Buddha. Maybe 20 years ago, the Javanese people, they are very scared, very afraid to proclaim that they are Hindu. But now, many of them, they are brave to say that I'm Hindu, or even they are back from Muslim to the original religion, Siwa Buddha, or we call it Hindu right now, Hindu religion. Sabda Palon, well, this is a very mystical person, Sabda Palon. But in my perspective, the 500 years is not 500 years human being. My perspective is the 500 years is maybe 500 years of Brahma, of 500 years of Div or Dewa, or the goddess. But as you know that the value of Hinduism has been implemented for long time in Indonesia, the value. So the religion of Buddhi, like in our army,
the value, the motto, the jargon, using our Sanskrit word. Our Sanskrit word, our motto, our national motto is Bhinneka Tunggal Ika. It's taken from our Sanskrit or ancient Jawa word, the value. So we are believe that Hindu is not just a religion, but it's a way of life of the humankind in the universe. So I think what was Sabda Palan says long time ago is now depending on our interpretation. But I believe on what Sabda Palan said. Thank you. Thank you. Thank you so much. Over to you, Vasish ji. जी, Rita ji, this is really very eye-opening. But at the same time, the eye-opening part is the same, that our atrocities, our challenges, they are, I won't say similar, they are ditto. And they are ditto, but people from India, I will have to say, and Hindus from India, they think Hindus only live in India, US, and Europe. This is a tragedy that our Dharam Gurus, our political leaders, they don't talk about Hindus anywhere else. Maximum they will talk about Hindus in Nepal. And how can we say that our Dharam Gurus and politicians are doing something for Dharma if Hindus are being killed, their lands being taken? And Hindu has a very less memory. Like Hanuman, we take pride in thinking, oh, like Hanuman, Hindu will wake up and he will win. But it's all karma. Our destinies are written by our karma. And our karma, like again Bhagavan Krishna said, that your knowledge is no knowledge if it doesn't take out the darkness of the world. Your strength is no strength if it doesn't protect the weaker. So the pride in Hindu has become as hollow as his faith and devotion. But again, thanks to people like you, all the people here, I hope that with every communication, we go close to finding our dharma, our duty. I hope we go closer to that. People are spending in US, UK, India, they are here. Even yourself, you are awake till 1 a.m. in Indonesia. It's a good sign. So after this, if you are awake, please stay with us. But if it's very late for you, I mean, we would say Shubhratri, that is good night. And we would like to bring on board Mahesh, Vasuji, and Crime Watch, which is a handle. They are working on collecting data, because in democracy and in a woke secular world, what has been written in books is that all religions are same. All gods teach the same lesson. So usually my question to the woke youngsters is, do you think all humans are same? And they will say, no, how can every human be same? So if humans are not same, then how can a group of humans be same? And it's a good starting point for them to think. If no two humans are same, then how can a group of millions of humans be the same to another group of millions of people with a history of slaughtering some of the millions because they were from the other religion? So Mahesh ji, can we unmute Mahesh ji and Crime Watch? My request. Namaste.
Namaste ji, Mahesh ji. I'm not able to see you on the screen. Okay, maybe it will be a little sluggish. आवाज So आ रही है? Mahesh, Can you हाँ hear जी, me? हाँ जी, हाँ जी, Clear? we can hear you. हाँ जी, हाँ जी, Mahesh. My video is also on. Oh, okay. Maybe it will take some seconds to. Yeah, it will. Yeah. Ji, Mahesh ji Namaste. has been very Thank wonderful you. work. One of those people who doesn't spend his time in social media looking for answers. He's one of those people who's creating answers. So, Mahji, can you tell us that what are you working on? आप किस चीज पे काम कर रहे हैं? If you're comfortable, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो जी जी है जी, जैसे आपको सुविधा हो. मैं तो देखिए, I think in English, I talk in English also, but now I started talking and writing in Hindi. तो पहली बात तो मेरा जो इंट्रोडक्शन मैं अगर आपको दूं तो मैं पहले तो मैं सिंध ओरिजिन हूँ, मैं सिंधु ब्राह्मण हूँ. हमारी उत्पत्ति सिंधु नदी के तट पे हुई थी और पार्टीशन के दौरान भारत के विभाजन के समय मेरे दादा और पूरे समाज जो है, जो मेरे दादा का घर था कराची में, ओल्ड टाउन, और जैसे कि मुझे बताया गया था, सारे जो हिंदू है मेजॉरिटी जो वो उनको भगाया गया था. आपके घर के अंदर जब तक आप कोई घुसेगा नहीं, आप बाहर नहीं निकलेंगे. तो जैसे कि मैंने काफी लोगों को देखा और सुना, अंकुर शर्मा जी एडवोकेट में काफी परिचित हूँ, फिर सरदार झटका किंग जो माननीय काफी अच्छा काम करते हैं. तो देखिए, मैं पहले बात तो आई एम सिंध ओरिजिन. मेरा आई एम born and brought up in Bombay, or since last almost 2 years I am working on this, on the social media, reporting the incidents, and since almost last 1 year मैं डॉक्यूमेंट करना शुरू किया है, genocide and persecution of Hindus in Pakistan. I am a human right activist for Hindus in Pakistan, and I am independently. Actually, my first question is, जी, how did the thought come to you that you should collect the data? I mean, like all of our Hindu friends, they circulate everyday news like newspaper here and there. That जी. आज ये न्यूज है, कल उस न्यूज में नाम अलग है, काम वही है. Why did you particularly think that okay, you should collect the data? Basically, it is in my nature. मैं बहुत सारी चीजों को पहले at the first instance चीजों को डॉक्यूमेंट करता हूँ, material evidence. I'm not an advocate, but still, right from the age of 16, मैं I'm habitual to these things. And 2000 लगभग 15 में मुझे पता चला कि हमारे समाज के लोग भी, जैसे मैं हमारे ब्राह्मण समाज का कुछ लोग हैं वहाँ सिंध में है, और कुछ यहाँ पर भी आए थे. एक डॉक्टर है जिससे पहले मैं सबसे पहले परिचित हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, और उसके बाद आई यूज्ड टू फॉलो पुष्पेंद्र जी, वीर. मैं तो उनको इनके वीर की उपाधि दूंगा. इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. महायोद्धा है वो हिंदू धर्म के लिए. और उनके थ्रू एक निमित्तकम फाउंडेशन है जो लॉन्ग टर्म वीजा और रिहेबिलिटेशन का कुछ वर्क डॉक्टर उमेंद्र रत्नू जी और जय भाई आहूजा ये कर रहे हैं जयपुर में. और उनका इंटरव्यू लिया तो मैंने उनको देखा, फॉलो किया, कांटेक्ट किया, और उन्होंने एक जिस व्यक्ति को इंट्रोड्यूस किया, उन्होंने जो ये सारे प्रोसिक्यूशन और जिनोसाइड के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिविस्ट थे. मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, राहत ऑस्टिन.
वो मेरे भाई भी हैं, और that sparked my, that was the spark which I started, sharing and bringing awareness amongst the Hindu. क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर मैं अगर आपको बोलूं तो लोगों को नहीं पता कि सिंध कहाँ है। हिंदुओं की तो बात जाने दीजिए कि सिंध कहाँ है, और कि पाकिस्तान में कुछ हिंदू रहते हैं, कोई हिंदू रहता है कि नहीं। आप बहुत सारे ये बॉलीवुड की मूवीज देख ले, बजरंगी भाईजान देख ले, पीके देख ले, कोई भी मूवीज देख ले, उसमें कहीं नहीं बताया उन्होंने कि कोई एक बंदा हिंदू वहां रहता है। तो दिस इज अगेंस्ट, इनकी पूरी तैयारी है, ये सब चीजें ये पूरा प्लान करके इस तरीके से लोगों को भ्रमित करना और फैक्ट्स को छुपाना। तो मैंने ये उनके जो इंसिडेंट्स जो वो हाईलाइट करते थे ट्विटर पे और फेसबुक पे, दैट वाज वेरी, मुझे इट शुक माय सोल फर्स्ट ऑफ ऑल। और उस तरीके से फिर मैंने क्या किया कि जून में आई स्टार्टेड राइटिंग, आई यूज्ड टू डॉक्यूमेंट इट। जनवरी से मैंने स्टार्ट किया डॉक्यूमेंट करना, और जून से मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, आई थॉट आई शुड write to the Ministry of External Affairs as well as the United Nations Commission in Geneva, and I was in contact with Arif Bhai Ajakia. He helped me a lot, so under the resolution 2017 section 5/1, so I used to, अब हर महीने मैं उसका डेटा बनाता हूँ। आई गो टू द फेसबुक, और बहुत सारे हिंदूज जो है वहां पर पाकिस्तान में, वो ज्यादातर सिंध में ही है, वो कुछ बलूचिस्तान और एक आध कुछ लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, तो उनके फेसबुक पे, और काफी कुछ जर्नलिस्ट भी है वहाँ के लोकल, वहाँ के ग्राउंड एक्टिविस्ट भी है जो चीजों को हाईलाइट करते हैं। सोशल मीडिया में, इवन मीडिया में जाता है ये बात। That time it it doesn't goes reported. तो बेसिकली, और फिर मैंने क्या, फिर धीरे धीरे मैंने आई स्टार्टेड सिंस जून, जन से तो मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू कर दिया था with the reference of the local media reports, regional TV news channel specifically, which I can hear and understand, listen to it and understand the language, because I'm used to, I'm Sindh origin, so I understand this in the language, but very difficult. I don't understand the Arabic script which is written, is one of the Hindu language जो एक इस्लामिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, अरबिक स्क्रिप्ट में लिखा जाता है, so you can understand. This is Sindh was the gateway of Islamic invasion, and it was very highly vulnerable, Islamic attacks से। तो जो जैन से मैंने डॉक्यूमेंट करना शुरू किया, that was purely on the basis of the media report. I used to search, कुछ ट्रांसलेट करके इंग्लिश टू, या फिर उसी के स्क्रिप्ट पे जो भी सोशल मीडिया में लगाता है, तो वो जो अरबी स्क्रिप्ट लगाता है सिंधी में लैंग्वेज में, तो उसी को कॉपी करके पेस्ट करता था, और वीडियोस आई यूज्ड टू सर्च ऑन द फेसबुक। तो आई यूज्ड टू गेट अ लिस्ट ऑफ द मीडिया रिपोर्ट्स, रीजनल टीवी न्यूज रिपोर्ट। महेश जी, मेरा एक सवाल है। हाँ बोलिए। जो कम्युनिस्ट संस्थाएं हैं, the communist, the structure of the word is actually communist, which other forces like Islam are using. They always come back to you with a document, human rights report on India, women violence in India, report on your face, and label your country that your country is unsafe for women, where women are actually being whipped
every day we see Muslim women being whipped in Afghanistan, Hindu women, of course, being raped, daily videos come. So my point is that what data you are producing, has it got you some benefit? Has it, the platform जो आपके data को use कर रहे हैं, जी have they been used to get some awareness on people that okay, so much of crime is happening in your country, why are you not concerned? Or to politicians also. So have you gone to politicians or people or community सभा जैसे कि अभी हो रही है, उन पर कुछ फर्क पड़ा है इस डेटा का? जी जो लोकल पॉलिटिशियंस हैं यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कि they will take interest or interfere in the matter. जहाँ तक ये सवाल है कि ये डायरेक्टली विदेश मंत्रालय या फॉरेन ऑफिसेस जो है या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, इट्स अ मैटर ऑफ इट इज मैटर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इट्स अ फॉरेन अफेयर. तो इंटरनली ये तो कोई चीज हाईलाइट नहीं कर. यहाँ के ही इंटरनल मैटर आप देखिए, कोई श्रद्धा वालकर का जो मर्डर हुआ है अभी 35 टुकड़े करके, तो कोई कौन पॉलिटिशियन बात करता है इसके बारे में? और कहाँ ये जो चीज यूनाइटेड नेशन में जानी चाहिए ये बात, तो या तो ग्लोबली इसको आप चीजों को उठाएं, तो ये यहाँ की बातें नहीं जा रही है वहां पर, तो इनकी बातें तो कोई कर नहीं रहा है बेसिकली. मैं तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को रेगुलरली एवरी मंथ डेटा देता हूँ इस चीज का, बट आई हैव नॉट रिसीव्ड एनी काइंड ऑफ रिस्पांस इवन फ्रॉम नो एक्नॉलेजमेंट. से देखते हैं महेश जी, इंडिया शाइनिंग की हमारे की सरकार बात करती है, जिसके ऊपर लेबल भी लगा हुआ है कि ये हिंदूवादी सरकार है, और उस लेबल को उतारने के लिए वो जितने भी हिंदू मर्डर हो रहे हैं उसके ऊपर एक चादर चढ़ा देती है, क्योंकि सरकार को ये डर है, उसको लेबल हो रखा है कि ये हिंदूवादी सरकार है. उसी हिंदूवादी सरकार में हिंदुओं का मर्डर हो रहा है. तो इस सारे सर्किट के होते हुए let us understand, if somebody has to go and represent Hindu persecution which is not being heard in our own country, what do you think is the possibility of taking this to, let's say, UN or EU and it's talking about Hindu persecution? आपको लगता है कि इससे कुछ पॉजिटिव हो सकता है? और अगर कुछ हो सकता है तो let us try to see उसमें थ्रू ग्लोबल हिंदू काउंसिल या थ्रू संगम टॉक या इंडस यूनिवर्सिटी जो हमारे ऑर्गेनाइजर्स हैं, व्हाट कैन वी डू टू टेक दिस परसिक्यूशन रिपोर्ट टू, लेट्स से, वेयर ह्यूमन राइट्स का जो मतलब है उसे समझा जाता है. जी देखिए, सबसे पहले तो भारत को ही कॉग्निजेंस लेना चाहिए इस चीज का. वी शुड नॉट थिंक ऑफ एनी वेस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न वर्ल्ड इस चीज का कोई कॉग्निजेंस लेगा, ये यूनाइटेड नेशन इस चीज का कोशिश है. पता है ना कि भारत में वोट तंत्र चलता है. हाँ, आप जानते ही हैं कि यहाँ पर राइट्स और डेमोक्रेसी का जितना बड़ा जोक, इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इज अ जोक इन इटसेल्फ. बिल्कुल. Because of, अगर if we look at the amount of constitution, ये तो मैं तो फ्रॉड मानता हूँ इसको. सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, इट्स अ फ्रॉड, इट्स नॉट अ जोक. So अब क्या है कि our political leaders have gone into this thick skin, कि उस thick skin से हम sensitivity लेके आने में, मतलब 140 करोड़ देश है, एक्सीडेंट्स होते हैं, पर इंस्टीट्यूशनलाइज जो क्राइम है विच इज टारगेटिंग द डिमिनिशिंग मेजॉरिटी, ऐसे सरदार रवि रंजन सिंह जी ने कहा था, विच इज अ टर्म विच वी एक्चुअली बिलीव इन. वी आर अ डिमिनिशिंग मेजॉरिटी टारगेटेड बाय अ फास्ट एक्सेलरेटिंग minority which has demonstrated in state of Kashmir and also now in Kerala, this ability to throw away
the majority residents of centuries from their land. बिल्कुल And our politicians have to juggle between maintaining law and order, जी which is good. Thankfully, there are no severe bomb blasts or attacks that used to be happening when I was growing up in a different regime. It was a different government. The word press always says of India, like how in UK and Europe, if there is some crime, they will say Southeast Asia, and if there is something, the people are Pakistani origin mostly. So my humble request is that through a platform, how can we take this data, or can we have a team of people who can take this data to higher officers in India and to Hindu community everywhere? Because if somebody doesn't open the door, we have to knock harder before the door is thrown open. करेक्ट Yeah. तो इस तरीके तो आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही है। देखिए दोनों तरफ से हमको करना पड़ेगा। एक तो लोगों को, समाज को मैंडेट देना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी खास करके हम अगर जो हिंदू सरकार है या हिंदू पार्टी है, बीजेपी हो या और कोई, तो बेसिकली एक समाज में अवेयरनेस आना जरूरी है। समाज को मैंडेट उनको देना पड़ेगा कि आप पहले तो श्योरिटी और सिक्योरिटी हिंदुओं के लिए भारत में पहले ये करें। दूसरा, जो हिंदू पाकिस्तान में है उनको आप सिक्योरिटी श्योरिटी दें, और तब जाके ये सारी चीजें इट विल बी हर्ड। Otherwise, they are basically turning a blind eye. Even the Ministry of External Affairs, it is their duty, it is their responsibility to take the matter. और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब ये पार्टीशन किया गया था 47 में भारत का, इसको तो मैं आजादी बिल्कुल नहीं कहता। इट वाज प्योर लैंड ऑफ लैंड ऑफ प्योर्स जैसे बोलते हैं ना, तो उन्होंने ये एक वर्ड उठा लिया मुसलमानों ने उस समय कि हम एक जमीन आपका कब्जा कर लेंगे, 1/3 जमीन उन्होंने कब्जा कर लिया, उसको नाम दे दिया पाक। मतलब हम पाक, बाकी सब नापाक। और आप देखिए उसका जो फ्लैग है वो दैट इज ऑल्सो इस्लाम का ध्वज है, उसका पीछे आप रखेंगे तो आप इंडिया का आप देखिए कोई हिंदुइज्म का कोई चिन्ह या कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। मुसलमानों का तो इस्लाम का जो मुस्लिम लीग का जो फ्लैग था, वही फ्लैग को उन्होंने एक व्हाइट कलर का कपड़ा दे दिया, जबकि वो एक्चुअल में पीस का नहीं था, वो था कफन का हिस्सा एक, तो हिंदुओं के लिए। और 47 में ये देखिए जो वायलेंस है वो 14 साल से हो रहा है, मतलब 1300 years वी कैन से, जब से बिन कासिम सिंध में आया। और ये जो आपने अल तकिया का बात किया, तो अल तकिया, यही मैं अल तकिया समझता हूँ कि हिंदू राजा जो राजा दाहिर थे, उनको बेवकूफ बना के अंदर आके कि भाई हम आपके साथ में, आपके अंडर वी आर सेफ। तो यही से एक बहुत बड़ी गलती शुरुआत हुई है इस चीज की। अब मैं आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट, आई एम वर्किंग ऑन द जीनोसाइड ऑफ हिंदूज इन द डिवाइडेड एंड अनडिवाइडेड, जबकि मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है 750 से लेकर कुछ डॉक्यूमेंट्स मैंने, मतलब डॉक्यूमेंटेड है ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इसमें। और फिर एक ये आप समझ लीजिए कि ब्रिटिश जब आए यहाँ पर 1750 में, तब से डॉक्यूमेंट होना शुरू किया। वॉच को भी बुलाना चाहूंगा, क्राइम वॉच, इफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। और so thank you Crime Watch, you are here with us because it's about, the session is about data documentation. Yes. So Mahesh ji is working on data documentation. एक 2 मिनट में बोल के मेरी बात इधर रखता हूँ आपके सामने। तो
पार्टीशन हुआ इंडिया का 1950 में 47 से, तो आपको पता है, सभी को पता है कि कन्वर्जन हो रहे थे, फोर्स कन्वर्जन हो रहे थे हिंदुओं के, वायलेंस हो रहा था और हर चीज का प्रोसिक्यूशन, इवन जिनोसाइड हो रहा था हिंदूज का। इसमें हुआ क्या कि मोहम्मद अली जिन्ना ने एक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के टक्कर के दलित लीडर थे बंगाल के, जोगिंद्रनाथ मंडल, उनको उन्होंने फर्स्ट लॉ मिनिस्टर बनाया पाकिस्तान का। ठीक है। अब 1950 में ये हुआ कि बॉर्डर्स ओपन थे दोनों तरफ से, ईस्ट बंगाल और यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान से, टू क्लोज द बॉर्डर एंड इवन to stop the waging war against Pakistan. Nehru invited Liaquat Ali Khan to sign a treaty in 1950. It was 8th April 1950. That was called a Delhi Pact or Nehru Liaquat Ali Pact. A guarantee was given in written कि भाई ये कोई persecution या कुछ नहीं होगा वहां पर। तो अभी हुआ क्या कि exactly after 6 months, immediately after that, signing the treaty, that is 8th October 1950 में, आप जोगिंद्रनाथ मंडल का रेजिग्नेशन लेटर, इट्स ऑन रिकॉर्ड, आप देख लीजिए। तो बेसिकली जैसे उन्होंने रिजाइन किया, ये प्रोसिक्यूशन को लेकर के माइनॉरिटीज की हालत इतनी खराब है, मंदिरें तोड़े जा रहे थे, मंदिरों को तोड़े जा रहे थे, हिंदुओं को मारा जा रहा था, रेप हो रहा था, और उनका रेजिग्नेशन लेटर रिकॉर्ड पे है। और जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया, लियाकत अली खान इशूड अरेस्ट वारंट अगेंस्ट हिम और उनको भागकर भारत में आना पड़ा। सो टू माय अंडरस्टैंडिंग एंड टू माय क्लेम, ही वाज द फर्स्ट persecuted minority of Pakistan, was the first law minister of Pakistan himself. You forget about the civilians or Hindus, we can say they were treated as a or उनको designated as a civilian. तब से आज चला आ रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डजंट टेक कॉग्निजेंस ऑफ सच ऑफेंस। और मैं एक और बात, आप जैसे बोल रहे हैं कि कुछ लोग, कम्युनिस्ट लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पर माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, तो मैं तो ये कहूंगा कि मैं जो डेटा इशू करता हूँ और जो डेटा मैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल को रिपोर्ट करता हूँ और यूनाइटेड नेशंस को रिपोर्ट करता हूँ, फर्स्ट इट्स ऑल बेसिस ऑन द फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, डेट ऑफ इंसिडेंट, द नेम ऑफ द विक्टिम, द नेम ऑफ द culprit, the place of the incident. अब तो लास्ट मंथ से तो मैंने I made a separate column, additional column, and given a link of the news link. तो किसी को कोई चीज का कोई कंफ्यूजन है तो वहां वो लिंक पे आप जाएं, आपको वहां का ऑथेंटिक रिपोर्ट जो मीडिया रीजनल टीवी न्यूज चैनल रिपोर्ट करता है वही मैं रिपोर्ट करता हूँ। तो कोई कम्युनिस्ट हो या कोई भी सोशल एक्टिविस्ट हो या सोशल मीडिया पे कोई चीज रखता है कि माइनॉरिटीज के साथ, मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे, मैं कहता हूं एक रिकॉर्ड मुझे लाके दें आप सामने। यू पुट योर विद द फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट्स ऑल। As I think our political elders said that you don't matter, your vote matters. So we don't matter, but the numbers we produce do matter. But thank you for sharing your input. Please be here because we will have some of your opinions also in between. Crime Watch, can I have you? And if you can share what you have been doing and आपका क्या सोच डाटा को लेके कि डाटा का इम्पोर्टेंस क्या है? मतलब आईटी बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन, डाटा दो अलग अलग वर्ड्स हैं, एंड अभी तो वी हैव समथिंग कॉल्ड बिग डेटा व्हिच द बिग कंपनीज आर यूजिंग टू एनालाइज प्रोफाइल्स, दिस दैट,
why are not the IT people, Hindu IT people in India, in US, in Europe, not able to think of big data to find that how the persecution patterns can be noted and make these reports? We have thousands, no, sorry, millions of IT people, millions. जी I think you are also one of them. जी So why did it not occur to you, to the rest of us basically, or maybe it is starting to occur with big data or with all these things, we can at least start to work on our survival. जी Because I don't know if Amir Khan feels threatened or not. Amir Khan feels threatened in this country. yes But Hindu girls are the ones who are chopped absolutely. by. So what is, I mean, yes, let's talk about data and let us talk about using this data to shake our woke youth. The masterminds of these woke youth, how to manage their minds, are of course the Bollywood lobby, the Audrey Trushke lobby, जी the dismantling global Hindutva lobby. They don't see it coming. I mean, this is interesting that we have been fighting this battle for like 1,000 years, 1,200 years, but the West has, they seem to have some kind of bulletproof jacket on. They think, oh, they will survive this atrocity. So let's talk data. जी कोशिश जी, पहले तो मैं क्षमा चाहूंगा, सुरक्षा कारणों से मैं अपना कैमरा ऑन नहीं कर सकता हूं। उसके बाद मैं चाहता हूं कि हिंदी में ही बात करूं, क्योंकि द्विज जी आई थिंक मेरे हिसाब से ड्रॉप कर गए हैं, तो यहाँ मोस्टली हिंदी ऑडियंस ही है, तो मैं हिंदी में ही। पर जो ऑडियंस है वो शायद हमारे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ भाई। ठीक है, फिर मैं then I start in English then. So question concerning usage of data and technology. So I'll just take 1 or 2 minutes to explain what we are doing and what we have been doing. This is exactly the day, 10th of December, when we started Crime Watch last year. So we completed our first anniversary. We faced a couple of Twitter bans. In fact, we are banned as of now, shadow banned, I would say. But we will not stop documenting the crime against Hindus. That said, what we have done in the past 1 year is that we have documented over 2,800 crimes. We have presence on almost all prominent social medias, including Telegram, Instagram, Twitter, and even Facebook. I keep using the word we because we are a small team. It would be unfair of me to take all the credit. We have a whole team taking all the risk and working to document these atrocities happening on Hindus, particularly in India, because nobody is documenting them. Nobody's documenting them. When it comes to your primary question about using the technology, so I would say yes, we have so far not leveraging the technology enough, except for basic usage, which is using the Twitter and other platforms. But yes, we are in fact trying to leverage a technological aspect of it, where just like a Google search engine or any other search engine works, it gives you result as per your inserted queries. Similarly, we are working on a platform, or we are working on a crawler. So those who are not so well versed with the term, I explain the word crawler. When you search or when you type in any word in Google, what it does, it looks for millions and billions of pages and looks for the relevant information, extract that information out, irrespective of what language or what country that information is coming from. It extracts that information and put it in a format that user understands the best. So that is a mammoth project. I don't commit that we would be able to build it in a 3 months time or 6 months time. This is a mammoth project, but once this project is complete, we would definitely be a miles ahead than we are today, where we are only being able to document approximately 2,500, 2,800 cases. That too
there are so many constraints with without the usage of or leveraging the technology. The constraints regarding the language. I understand 3 languages, but beyond that, Malayalam, Telugu, Tamil, Kannada, I don't understand that language, particularly when they are written in their respective scripts. I understand Telugu to some extent. I understand Kannada to an extent. I understand Marathi to an extent, but when they are written in their respective scripts, it becomes very difficult to search that in a particular news portal, or for that matter, Google. But yes, when we have a crawler in place, that will extract information, and that will also leverage us to document maybe 100 or 200 or 300 cases in a day, versus we are doing it for let's say in a month or so. So yes, technology has to be definitely leveraged to an extent that we are able to document it, and once that documented data is there, we can prepare a detailed draft of that documentation and present it at global forums like the other gentlemen, including Jaya Ahuja ji and other gentlemen spoke about. The forums like UNHRC, United Nations, or for that matter, even our own NCRB and respective ministries who are responsible for making the laws. So yeah, that's what the plan is. That's what our aim is, with Prabhu's blessing and with good wishes from all the Sahodars across the world. We would be able to achieve it. Thank you so much. Thank you so much. Those of us who are still there, I mean, people are watching, you have the flyer. The email is globalhindukouncil@gmail.com. If you have suggestions, if you want to support certain initiatives, because there are leaders and there are supporters and there are followers, and I think this chain keeps moving. The followers become supporters become leaders, and good work keeps happening. So thank you so much for this. You can follow Crime Watch and this handle. If you can please write down your Twitter handle for everybody to follow you. Yeah, Crime Watch, definitely. it was great. Okay, kindly spare a minute and please make a note of this handle, or you can write to Global Hindu Council to know the Twitter handle of all the speakers. Thank you so much. आशीष जी 2 मिनट कुछ आपको यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ, अगर आपका परमिशन। कहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं आप? जी मैं कुछ एक बात ऐड करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। डेमोग्राफिक असॉल्ट और डेमोग्राफिक चेंजेस की जो डिस्कशन हो रही थी पहले, तो यहाँ पर मैं एक आपको बात बताऊं, जैसे जो झटका किंग जी, सरदार जी, क्या नाम है उनका, भूल जाता हूँ मैं, ठीक है, तो उन्होंने एक पंजाब का कोई एक आई थिंक कौन सी जगह थी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट की बात की थी। तो वैसे एक जगह है सक्कर का सबसे बहुत बड़ा जिनोसाइड हुआ था हिंदूज का 1939 में। तो टू ब्रिंग दी डेमोग्राफिक चेंज, तो इस तरीके से क्या होता है कि मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट किया गया। जो सक्कर तालुका में 40,000, इट्स ऑन रिकॉर्ड 40,000, बट बेसिकली मैं आपको उसका भी रेफरेंस देता हूँ। 40,000 70,000 टोटल पॉपुलेशन थी, 40,000 हिंदूज थे, 40,000 हिंदूज थे। और जो ये सक्कर का जिनोसाइड हुआ था हिंदुओं का, तो उसमें केवल रिकॉर्ड तो कुछ और बताते हैं, 150 इवन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने किताब लिखी थी पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया, दैट वाज इन 1940। he documented the violence against Hindus since 1920 to 1940. So it's वो एक बुक को मैंने रेफर किया, बट इट वाज बहुत ही कम, और मैंने थोड़ा सा इसमें करीब 150 ऐसा कुछ फिगर है। लेकिन
जब मैंने आई स्टार्टेड इनको क्लोजली स्टडी और एनालाइज करने की कोशिश की, इनके जिनोसाइड के पीछे 4 लोग थे और द लीडर वाज सर जीएम साई सैयद, जो जसमम का जो फ्लैगशिप लेके लोग घूम रहे हैं। तो ही वाज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड द जीनोसाइड ऑफ हिंदूज इन सक्कर। Along with him, कुछ लोग सपोर्ट करने वाले होते हैं, कुछ लोग करने वाले होते हैं। तो डेफिनेटली जब हम हिंदू परसिक्यूशन की बात कर रहे हैं तो ले दे के इंडिकेटर्स विल कम फ्रॉम वन सोर्स ओनली, दैट गोज विदाउट सेइंग। तो ज्यादा थोड़ा सा फोकस हमें ये करना है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कैसे हम अपने इतनी बड़े जो ट्विटर पे और व्हाट्सएप पे एक्टिव हैंडल्स हैं, पीपल हैं, हाउ वी कैन सपोर्ट यू एंड क्राइम वॉच एंड 4-5 अदर पीपल दैट आई नो टू जनरेट मोर डाटा, बिकॉज दिस ओनली विल बी एबल टू मेक सम नॉइज ऑन द conscious of senior, people in the leadership. Correct, I understand your point. They have to work in the same manner which I am working. जी जी, तो मैं आपके साथ साथ आपकी टीम को कैसे बड़ा कर सकते हैं उस पर हम कुछ करेंगे, बिल्कुल करने के लिए। हाँ, तो यही जो तरीका है कि आप मुझे तो जैसे मैंने कहा कि मुझे वो अरेबिक लिपि नहीं आती सिंधी की, तो मैं क्या करता हूँ उसको ट्रांसलेट करता हूँ, या तो उसी को जो भी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है वो कोई खबर लगाता है सोशल मीडिया, फेसबुक पे ज्यादातर आपको मिलेंगे, ट्विटर पे बहुत कम लोग हैं जो ये करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट है, लोकल न्यूज चैनल है, तो ये सारी खबरें फेसबुक पे लगाते हैं। मैं क्या करता हूँ कि उनको कॉपी पेस्ट करके या कीवर्ड को टाइप ट्रांसलेट करके उस पे सर्च करता हूं, तो आपको लिस्ट ऑफ, एंड दे नीड टू अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज, सिंधी लैंग्वेज। आप बिना इसके समझ के आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस भी वहां पर आपको मिलेंगे, कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलेगा फोर्स कन्वर्जन का लड़कियों का, और लड़कों का भी है, जो यंग लड़के को टारगेट। अभी ये कुछ दिन पहले की बात है, 16 साल का लड़का वेंट मिसिंग एंड आफ्टर 6-7 days ही वाज फाउंड इन मदरसा एक्सेप्टिंग एम्ब्रेसिंग इस्लाम। उनका कन्वर्जन सर्टिफिकेट एक कोई मस्जिद ने इशू किया। मतलब वहां देखे तो हर कॉर्नर में, हर एक नुक्कड़ में भी आपको कोई मस्जिद या मदरसा मिलेगा। तो दे आर the court endorse that that is understood, Mahesh. Let us talk about the strategy, because people here, they are already in awareness, that's why they are here. So I will request you if you want to stay back, because now the next and the last part of today's conference is a very heart-touching talk. I would request Desh, Deepak Kapoor ji and Rutvij Bhole ji to be unmuted. Kindly you can join. Namaste, Rutvij ji. Rutvij ji is one of those young people. When I was his age, and when most of people were, the age that he is in. Rutvij, may I ask you your numbers? How many birthdays, how many summers have you seen? So far, this body's seen 17. Atma, hopefully, has seen many more. At 17. पहले तो सभी की तरफ से इस महान युवा को, इस महान हिंदू को प्रणाम है, सभी की तरफ से है। Yeah. Well, unfortunately, the media is actually looking at this boy. What's his name? इनका बच्चा है जो हमारे ये सैफ अली खान और इसका क्या नाम है इस लेडी का, करीना कपूर का। करीना कपूर का, या इनके बेटे का नाम क्या है? तैमूर, राइट? तैमूर, या।
I mean, we have this beautiful country where the cities are named after, the slaughtered persecutors, and with the pride, the icons of Bollywood, heartthrobs, are named after people who led armies of invaders, Mughal invaders, who would plunge spears in the heart and take out the hearts of the kids and swirl it in the air. But anyways, I think my heart, my hero is the youth. Like Rutvij is my hero. Exhausted from the day. So Rutvij and Desh Deepak Kapoor ji, his articles are very in-depth analysis of what is happening. Thanks both of you for joining us. Now we all know Bharat Sone ki Chidiya, India, the next Vishwa Guru, big labels. How much of these labels make an impact on our population vis-a-vis our vis-a-vis the leaders of corporate Hindu movement, the big four of corporate Hindu renaissance, the big four of corporate Hindu renaissance, ISKCON, Swaminarayan, Sadhguru जी, श्री रविशंकर जी. पहले तो सभी गुरुओं को प्रणाम है. Blessed to have these great gurus on our land, but also 1,000 years of persecution, so many genocides, so many murders and rapes. How is it that our political gurus and dharam gurus walk a thin line which walks right between this across the Hindu landscape without touching anything, without touching all those concerns that normal Hindus like you and me feel? And I think, as Providence would have it, we will be able to deliver a message to our political leaders and our dharmic leaders that Hindu is an orphan in its own land, politically and dharmically. Will you start speaking on it? So, let's start with Desh Kapoor ji. Right. So, with offering references to all our gurus. Yes. Om Shri Guru Namah. So I have the highest regard for all the gurus, and like I have worked in certain areas of some of the organizations. So here is what I would say, right? सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे लोग एक ही काम नहीं कर रहे होते. The work that say Sadhguru is doing, or Shri is doing, or Swaminarayan group is doing, is something very different. The things that activists need to do is something very different. The thing that the government is doing is very, very different. Even within the government, the work that, say, Ajit Doval ji is doing is different. What Amit Shah is doing different. And what Modi is doing is very, very different. So we have to understand that everybody is doing a different kind of work, and they cannot do our work. We cannot do their work. They cannot do our work. So ये बात clear हो जानी चाहिए. Now, so when we say dharmic gurus, right? Now, dharma in itself is different from religion. पहले तो religion word ही हमारे लिए वो है, like it's like has no relevance to Sanatan Dharma, because we were never actually believers in any way. This was हमारे पास थोपा गया था बाहर से. And there is a difference between dharma and belief. Unfortunately, a whole lot of things from the belief systems have contaminated our dharma, our understanding of dharma itself, which is very, very sad. And like that goes all the way from understanding karma. Karma को हमने वैसे ही understand कर लिया जैसे sow and you shall reap होता है in Christianity. It has nothing to do with it.
In fact, if you read Yog Vashisht, जो वशिष्ठ हैं वो साफ साफ राम को बोलते हैं, anybody who believes in destiny, fate and divine will is an idiot, because there is no such thing as that. The only thing that is relevant is पुरुषार्थ. In fact, एक बड़ी अच्छी स्टोरी है उसमें योग वशिष्ठ में, जहाँ सरस्वती जी सिखाती हैं एक रानी है, रानी लीला. रानी लीला जो है वो बहुत बड़ी भक्त है वो सरस्वती जी की, and she appears and then रानी लीला like is talking to her कि मेरा जो पति है वो लड़ने के लिए गया है. तो सरस्वती कहती हैं तुम इस लोक में नहीं, तुम कई लोकों में like exist करती हो, in many dimensions, something like the many dimension theory of quantum mechanics. चलो मैं तुम्हें दूसरे लोक में लेके चलती हूँ. दूसरे लोक में रानी लीला 2 होती है. वो रानी लीला 2 जो है वो लाइक उसका पति सामने मरा पड़ा है. वो कहती है आई वांट टू accompany him in my physical self in all the other realms. तो सरस्वती जी कहती है तथास्तु. रानी लीला 1 कहती है आपने ये कैसे दे दिया ये वर, जबकि आप जानते हो कि ये सत्य नहीं है. उस समय जो सरस्वती जी बोलती हैं वो बहुत ज्यादा पर्टिनेंट है हमारे लिए. वो कहती हैं मैं कौन होती हूँ किसी को कुछ देने वाली? Who am I to give you anything? I am the deity of your intention. Whatever you want, you get. Whatever you work for, you get. तभी हम तथास्तु बोलते हैं, इंशाअल्लाह नहीं बोलते. तथास्तु का अर्थ होता है तथ अस्तु, जो जिसके लिए आप काम करो वो आपको मिले. हम किसी unseen, unheard of, like realized force, वो जिसको कोई जानता नहीं है. इतने सारे स्पेस मिशंस गए हैं, आज तक किसी ने नहीं देखा कोई बंदा वहां बैठा हुआ है saying God here or Allah here, right? So there is no such thing as God, Allah sitting anywhere in this the entire universe that we have known. तभी हमारा understanding. I will give you the benefit of telling one incident, spiritual incident, but because we are already 3.5 hours in session, and definitely I would love to share more. But I have 2 questions. I think I'll do a little bit of role reversal here. We are in a war. We are already in a war. We are bleeding. When 800 million of your people have been killed, I mean, Hitler is labeled as the most hated person with 6 million deaths to his belt. Our own father is now, if we put the stats together, he is responsible for at least 3 million deaths. Oh, no, sorry. I'm slightly wrong. No, I got but it. the connivance between Churchill and the father of secular Hindus, the father of secular, between the connivance of Churchill and that secular person, 4 million Hindus died in Bengal famine. They were not poisoned, they were not slaughtered, they were just left to die with their prana leaving their body. Right. And this person has been claimed. So now that since we are in a war and we accept it, we can only talk of spiritual enlightenment when there is peace. And I also think that our dharma gurus, the Kathavachaks included, the whole the great spiritual scholars, the bandwagon of spiritual scholars who are talking about spiritual enlightenment. So my question is, if spiritual enlightenment was the only thing required as a final, goal of human life, then Bhagwan Krishna, again, I would remember very less of Bhagavad Gita, will give the Gyan of Bhagavad to Arjun and declare him the winner and say, everybody go home. He is the winner. You don't have to fight. Right. But Kathavachaks talk about Shastra, Shastra, Shastra. Our God doesn't talk about Shastra alone. So इसको समझ I would like to invite Rutwiji. Rutwiji, do you find some
some merit, some concurrence in the spiritual enlightenment thing when all the big four of the corporate Hindu world are actually the CEOs. They are not the CMOs, CIOs, CTOs, and CFOs. They are the CEO, which means they hold absolute responsibility for the welfare of their disciples, right? Desh No, I Kapoor think ji? so. I would so let me just clarify a couple of things, right? Like one is like we are penalizing our gurus for the scale that we need. For example, हमारे बहुत सारे ऐसे critics हैं यहाँ पर like within the Hindu ecosystem, which say that yoga is this and yoga is that, and like yoga is being taken over by the Westerners. But none of them will ever be invited to any of the international forums of any of the yoga forums that are there. Why? Because they don't have scale within that yoga world. हमारे जो गुरु जो बढ़ रहे हैं, जो एक स्केल पैदा करते हैं, that scale is necessary because if we need to fight all the large organizations, like whether it is like on the Islamic side or Christian side, they have scale. Like we do not have any scale, we do not have any voice, we cannot change anything. That is why I think it is not helpful to call them corporate gurus or CEOs or whatever it is like we want. We need to understand how much of work that they do. So that is one thing. The other thing is that like if we talk about enlightenment, we have to understand what enlightenment really means. गीता अगर एक किताब ही होती तो बहुत आसान था. रात को श्री कृष्ण आते कहते भागवत गीता अगर किताब होती तो बहुत आसान था. वो कृष्ण शाम को आते, अर्जुन को बोलते ला भाई तू सुबह पढ़ के आ जाइए, हम महाभारत लड़ने जाएंगे. वो बहुत आसान था. Please Bhagwan Krishna. Right. This is what right from our brothers that we call Shri Guru Granth Sahib, but the Hindu has so less time for his pursuit that he shortens the Bhagavad Gita to Gita. Sorry, but I have to tell you this, and that's why I say they go to corporate schools. Nothing wrong with that. But we have to understand. So what I'm trying to say is कि जो भगवत गीता थी वो एक book nahi thi. That was a process of enlightenment. When Shri Krishna takes Arjun through the entire process, that is the process that was required for Gita to happen. हमारे पास जो भगवत गीता आई है वो श्री कृष्ण से नहीं आई, वो संजय से आई है, जो संजय ने लिखी थी. संजय उवाच से शुरू हुई थी जो भगवत गीता हमारे पास आई है. पर संजय को वो कृष्ण ने जो श्री कृष्ण ने दिया वो संजय को नहीं मिला था, वो सिर्फ अर्जुन को मिला था. Because whatever Shri Krishna was giving was not just words, was not as gyan. Anybody who has ever gone through any initiation by any guru will understand this, that whatever he speaks is not that relevant. Whatever he transmits is the critical part. That understanding is very, very important to understand what the gurus or dharmic gurus are really doing. There is a fantastic book on how the Christianity actually defeated the paganism in Greece. वो है कैथरीन निक्से की द डार्कनिंग एज. उसमें एक बड़ी अच्छी चीज लिखी है. उसने कहा है कि at the beginning of 300 AD, nobody could have ever believed that the Greek civilization would ever go away. But the end of the 500 AD, nobody could believe that such a civilization was even there. And the reason why somebody said was because they did not find anything relevant to even fight for. The only reason why Hamara Sanatan Dharma has still existed is because we find something to fight for. हमारे जो पिछली जो वो अभी बात की थी वो रवि रंजन जी ने, सरदार रवि रंजन जी ने, कि 6 हाथ की देवी के बारे में कोई एक्सप्लेन करने वाला है नहीं उनको. वो इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने इसके बारे में एक धार्मिक तरीके से कभी देखा ही नहीं है. हमने कर्म को ढंग से समझा नहीं, हमने एनलाइटनमेंट या मोक्ष को ढंग से समझा नहीं, हमने देवी को भी ढंग से समझा नहीं है, हमने टेम्पल्स को भी नहीं समझा. Kapurji, I will have to come later. Right. My questions are very simple.
My question is very simple. Let us understand the question. Who is going to shield the orphaned Hindu if not the political or the dharmic gurus? Who is going to shield the orphaned Hindu? Let me rephrase it. And I will have to come to Rutvik because he's been on screen and waiting. I will, I think I have to, allow this question to be soaked in. Few hundred or maybe few thousand Hindus being killed every day in a democratic country, nobody takes notice. Judiciary doesn't take notice, politics doesn't take notice, dharma doesn't take notice, schools, families, and we want to go to UN to save our Hindus. Who is going to take initiative to take notice is my first question. Not the individual single person, not the family, not the institution, not the parties, not the groups, nobody is taking responsibility for this persecution, that it has to be questioned. And all those people who are doing, of course, they get isolated. Yeah. So, Rutvik, what do you feel about this? Is my question right, first of all? No, your question is definitely right. I mean, I think a prime example of this was just before when Vijay spoke, right? I mean, he was talking about love jihad, he was talking about the forced conversions. I mean, how many of us knew those were happening? How many of us were standing up for them? Very few of us. And so, to me, one of the key issues here, first of all, lack of information. That one's fairly simple, just these people are marginalized, they don't get the story out there. But the other issue I find is that the old culture, the old traditions of, follow loyalty to only those within our own sampradaya, those still exist in some ways, not amongst all Hindus. There's certainly a lot of Hindus that are willing to consider all Hindus, whether they be, ISKCON or BAPS or, Sri Vaishnav or, Kashmir Shaivat or whatever. They're willing to consider them all their brothers. But a lot of other Hindus only take responsibility for those within their own sampradaya or those within their own state or those within their own language. To an extent, I'd say even ISKCON, I can't confirm these stories, but I was talking with one Acharya, one Shaivat Acharya. Don't make statements which would be probably, just heard and might just create controversy because they are just heard. So if there is nothing to be proven, let's just stick to the point that, our sect, let's stick to where we have a proven thing or have the right questions. Let's stick to the questions. Sure. In that case, that I can confirm with my own eyes. I've seen a lot of people, only focus on the people within their own sampradaya. So then after that, those people outside of the sampradaya, those people that are, say speaking of this language or not following this, certain sect, those people are persona non grata for some Hindus. And so to me, that culture amongst, the kind of bigger, groups has to be removed and has to be shown that, you may follow this one guru, but still then all Hindus and all people of all dharmic faiths arguably are your brothers and sisters. My second question is, it's a very interesting thought that came to mind. Around 1 million, no, more than 1 million Hindus in Pakistan. I think 4 to 6 million. Sorry, my data may not be right. These Hindus in Pakistan, these Hindus in Bangladesh, are they entitled to worship, to be devoted to the big four of corporate Hindu renaissance? Are they entitled? Because if they were entitled, the leaders, our dharma gurus, will give them some blessing. And for them, the blessing is blessing of life and keeping their daughters safe, their bodies intact, their homes and temples not ransacked. So again, who are the gurus or the margdarshaks for the persecuted Hindus in Pakistan and Bangladesh? I think that's I hope this question is to all the listeners. This question is taken in the right spirit, not because if you are a Hindu
and you are not able to introspect, then you are a radical. Is my thought. Anybody who is not capable of introspecting automatically becomes a radical. Right or wrong? We will do a question answer with the audience in the last. Yes, please. So I think this is a two-part question you've asked. Let's break it up into two. First of all, are people entitled to be, bhaks of the major four organizations? And second, if they are, what responsibility do these gurus have towards their bhaktas? So to start with the first one, I'd say that traditionally, anyone who has been accepted by the guru is allowed to join the Sampradaya. I don't think any of these people, Sadhguru, Shri Ravi Shankar, anyone has made any statement saying that they don't want Pakistani or Bengali Hindus as their Shishyas. So to me, no, they're absolutely entitled to, follow Sadhguru or follow ISKCON or follow Baps or whoever they wish. But now to the second more complicated question of what these gurus owe them. I have one more point to make. When there was Gurukul, because the Guru has a kul, the word Gurukul means that the Guru is the patron, the Thakur, the Swami of that kul. And we also talk about Gurukul. So I see all these, followers and the Gurus as a Gurukul. So when a Pakistani or a Bangladeshi Hindu will seek refuge with the Guru, will be a part of the Gurukul, right? In a way, but not anymore today, because protection also. Yeah, he will also seek protection, because Gurus back in the days of Gurukul, they would protect, feed, teach, and in the end ask for Guru Dakshina. If this is how it was, right? Kuldeep ji, we will come to you right after this. Yes, please. So both of you can answer, yeah. Yeah, I'd say, let's leave Sadhguru and Shri Ravi Shankar aside for 1 second. Let's just talk about ISKCON and Baps. I'd say for a second here, you're making a different conflation, right? The Sampradaya can't be confused with an individual guru, because gurus can be initiated into a Sampradaya. So just because someone is a follower of a Sampradaya doesn't necessarily mean that they're the follower of a guru, and that's not anyone's fault, right? I mean, let's take Baps, because I know ISKCON has a presence in Pakistan, and I believe they have a presence in Bangladesh as well. You can be, a devotee of Sri Swaminarayan and, Pramukh Swami Maharaj and all of that, but simply because the gurus of these sampradayas aren't permitted to build their mandirs, aren't permitted to build the gurukuls, aren't permitted to operate in these countries, you can't necessarily follow a specific guru. Instead, you're really just following an ideology, which in these countries is unfortunately the only option a lot of these people have. Is that their fault? No, I'd argue it's not the fault of any of these major sampradayas either. It's the fault of these Islamic governments for restricting the basic freedom of religion that ought to be given in every country. That these people are not allowed to come and set up their gurukul, set up their mandirs. And so the Hindus are unable to follow any guru aside from the ones that are already residing in the home country that they live in, and that too, those gurus they have to follow secretly. So it's not even a question of, should these people be given protection? In the ideal world, obviously they should. The question is, can they be given protection, and that too by whom? There's no gurus in, there's no gurus from these, corporate entities that you call them to begin with in these countries. So it's hard to place the blame on anyone except the Islamic governments that these people reside in. I think you're on mute. Yeah. So I mean, do you want to add something to this, to your thoughts? Because Ritwik has definitely shared his input, and yes, I mean, inputs are always good. Of course, inputs and facts are two different things. I mean, my question is that 1 hour ago, 2 hours ago, a friend from Bengal who was talking about Bangladeshi plight,
Jay Ahuja ji, who would have joined, or Mahesh Vasu ji, is they're talking about Pakistani Hindu plight, and we are talking government should do something. Then the government thinks maybe our PR will get damaged. Average Hindu thinks my corporate life will get damaged. So every category of Hindu, from the audience to the listeners to organizers to leaders of every institution, they have a reason to not to participate, other than a bunch of them. Yeah, yeah. If you want to say something or question that, please feel free. You are asking me? Yes, both of you. I mean, it's okay, yeah. So, so one of the things I like again, I want to come back to this is that there are two aspects of this, right? Like one is, as a dharmic person, as a Hindu, how am I going to construct myself and understand the world the way it is, right? And like in my view, I think the understanding that dharma or moksha or enlightenment is only about some esoteric stuff is wrong. The way I understand it is about seeing the world the way it is. When we say seeing the world the way it is, it means that if there are threats, we should see them the way they are and act accordingly. The reason why we are where we are is because we have not seen those threats the way they were all through in the last almost 1,400 years. And that is why we have landed here. The reason why, and conversely, the reason why we have not been totally destroyed is because there were certain gurus, say Ramakrishna Paramhans, Ramana Maharishi, Swami Vivekananda, who came and kept us, pointing us towards that same direction that Shri Krishna actually pointed, Krishna like towards. वो इंसान जो अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़ना चाहता था, उसको धार्मिक तरीके से बताया कि क्यों उसका शस्त्र को उठाना ही उसके मोक्ष का कारण बनेगा। पर ये बात हम जो हर चीज को एक मॉरल तरीके में देखते हैं, we will never be able to understand this, because this needs a more deeper understanding of our dharma itself and all the things that are around it. So when you ask the question कि जो बांग्लादेशी Hindus हैं, जो पाकिस्तान में जो Hindus हैं और जो इंडिया में Hindus हैं, will they be forever be persecuted? They will forever be persecuted and will be destroyed if we do not understand who we are. But if we understand who we are and fight for that, if our fight is worth fighting for, then we will not be destroyed. But do we understand that we are worth fighting for? वो आपने जो क्वेश्चन पूछा, जो वो बच्चे, sorry. Question, and with 1 billion Hindus, let us say let us just have a let's have a situation that you are responsible for the knowing of dharma for 1 billion Hindus. What would be your first 3 steps to implement? Is my first question here. And if this plan takes, let's say, X amount of months, actually it is years, then those people who are dying today, our daughters, it can be my daughter, it can be me, it can be your daughter, it can be your sister, unless we don't take all these atrocities on us. Dharma looks like a beautiful cloud with a silver lining from where a spacecraft is going to land and save us all. So unless the atrocity falls on us, we like to introspect, we like to say beautiful things. No, again, I don't want to like make it as some esoteric thing. Dharma, when I'm saying dharma, for me, anybody who dies, all the daughters, Shraddha and everybody else who die, is part of me. My dharma makes it
makes me into such a person that for me, Shraddha is part of me. Like similarly, all the Hindu daughters who are being converted and being killed in Pakistan are also part of me. So I'm not. I like this. Thankfully, you took me to the right place. If Shraddha is part of you and part of me and part of Rutwij and part of anybody in the audience, part of any ISKCON devotee, Swaminarayan devotee, Sri Ji devotee, Sadhguruji devotee, why don't we take our plight, our pain to our Guru? And what will he answer? I am going to leave this question hanging right here, right, because this is the point of, my question is not, my point is not to make judgments, but my point is to make people think that if you want to take your atrocity, and if you say Shraddha is your daughter and your sister, and you say that my Guru is everything for you, you will take this question to your Guru. So kindly do that. Vashishti, I only have one question to that question. Not only what will these gurus do if they believe that all of these people, share the same plight because they're all Hindus, they have the same Shraddha, but I'll just add in, what can these gurus do? I'll just, leave that hanging as well. Sorry, what did you say again? Not only you're saying, what will these gurus do? I'm asking, what can these gurus do for Hindus that are trapped in Islamic nation, where basically it's very difficult to reach them, where they are constantly under attack? It's a very different situation than you have, a local Gurukul, and then, something's happening, to one of your devotees that's in your city, right? This is something you're talking about either a country away, for us in America, an ocean away. So, and that too in a country that's completely foreign to us, and that will not allow any help that we send. And so the question becomes, what can we do? Not even what, will we do? The first question is, what can we do? So yes, with these two very good questions, I think, with good questions, our conscience, we start scratching our conscience. And if we ever start scratching our conscience, we will go little close to Dharma. Because conscience, when it sleeps, Dharma also sleeps with the conscience. So thank you so much. I will request the recording to be stopped, and we can have a 15-10 minutes